फाइनल्स पंजाब स्टेडियम नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर से आज का सेकंड एंड फाइनल मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस थाईलैंड। कुछ ही देर में ये मैच स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। बॉल जो है टच में चली गई है, जिसकी वजह से लाइन आउट होगा और पाकिस्तान की थ्रोइंग है। जी, मैच किक ऑफ हो गया है। पहला लाइन आउट पाकिस्तान को मिला है और ये बॉल थोड़ा अर्ली जिटर्स। ये सेकंड एक्साइटिंग टेस्ट मैच शुरू हो चुका हुआ है और बड़ा क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। जी मोहसिन, what a cracker of a game we had as the first one. We just hope it is half as good as the first one. देखो स्क्रम है, पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा स्क्रम किया है। दोबारा से डोमिनेंट स्क्रम किया है पाकिस्तान ने और ये पेनल्टी, अर्ली पेनल्टी। Well, Mohsen and Shaz, that's exactly what the doctor prescribed for Pakistan. We could see the intentions from the scrum is we're going to scrum a big scrum here. The referee has awarded a penalty, and Pakistan is going to go for that touchline. Touch. So Shaz, are we seeing a driving ball straight away? We hope so, Ben. That's exactly what you recommended last time around, and they scored a try. Once they put a drive in that maul, they did fairly well. So we saw good throw-ins in the first game, and this is another example. And here they go. This is exactly what you predicted. Okay, so मॉल बनाया है पाकिस्तान ने, ज़बरदस्त जाते जा रहे हैं। मॉल की कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है। ट्राई लाइन के बिल्कुल करीब है इस टाइम और हेल्ड अप की कॉल है रेफरी की कि प्लेयर ने बॉल को ज़मीन पे लगने नहीं दिया थाईलैंड के, जिसकी वजह से हेल्ड अप का साइन दिया था रेफरी ने। और स्क्रम होगा पाकिस्तान की। दोबारा बॉल है, दोबारा चांस है शेज इनके पास जी बिल्कुल ट्राई स्कोर करने का अगली 5 मिनट्स में। और हमने पहले देखा है कि जिस तरह बेन ने भी अभी बताया है कि पाकिस्तान ने राइट फ्रॉम द ऑनसेट अपना जो स्क्रम था उसकी डोमिनेंस को बरकरार रखा है। एंड लेट्स सी हाउ द सेकंड स्क्रम ऑफ द गेम फेयर्स। बॉल डालेंगे, स्क्रम पुश, अली शायद बॉल उठाई दाऊद को और आउट हो गया बॉल टच लाइन से और थाईलैंड के पास बॉल चली गई है। स्लो मोशन में देखें रिप्ले में टच हो गया है। अच्छी एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन थाईलैंड का भी बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस हमें नज़र आया है। गुड लाइन आउट बाय थाईलैंड टू। ओह लवली, व्हाट अ गुड ब्लॉक। थाईलैंड के प्लेयर रेफरी के साथ थोड़ी के बात करते हुए रेफरी ने 5 मीटर स्क्रम अवार्ड किया है पाकिस्तान को और थाईलैंड के प्लेयर्स आर अ बिट कंसर्न के 22 ड्रॉप आउट पे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दैट वाज अनइंटेंशनली ब्लॉक, सो रेफरी हैज़ द राइट डिसीजन कि स्क्रम होगा। 5 मीटर पे पाकिस्तान की बॉल है। बहुत अच्छा चांस पाकिस्तान के पास राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। लेट्स सी हाउ लाइन पे बॉल पीछे गिरी है पाकिस्तान के पास ही अभी भी। गुड डिफेंस बाय थाईलैंड, ज़बरदस्त डिफेंस थाईलैंड की तरफ से, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास बॉल है। दोबारा कोशिश करेंगे, ट्राई की अर्ली टाइम्स गुड ड्राइव्स डिफेंस। कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, ड्राइव्स करने की कोशिश कर रही है। दे सेटिंग इट अप, लॉन्ग पास दाऊद शाह के पास बॉल, they need to go with the advantage line. के पास brilliant Thailand.
अहमद से आकिब को टैकल कर लिया है थाईलैंड ने, लेकिन अभी तक साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अली खान is a good Pakistani forward, strong lad. This is Umair. Yes, this is Umair Khan. Oh, that was a lovely handoff there. Good to watch. Pakistan ने अभी ज़्यादा तक फेज बना चुके हैं पाकिस्तान, more than 8 I think, और स्टिल कोशिश कर रहे हैं थाईलैंड का डिफेंस को ब्रेक करने के लिए। रेफरी ने I think पेनल्टी अवार्ड किया है पाकिस्तान को, वो कंटिन्यूटी शायद नहीं होने दे रहे थे थाईलैंड। एक्चुअली जब जो टैकलर है उसको रिलीज़ करना है, टैकलर जब जिस बॉल कैरियर को जैसे वो उसके जो नीज़ हैं ग्राउंड पर लगते हैं तो ही हैज़ टू रिलीज़ द प्लेयर, जो समटाइम्स नहीं होता है, या प्लेयर जो स्टक हो जाता है रक के अंदर, तो दैट्स वेयर पेनल्टी इज़ गिवन फॉर नॉट रिलीजिंग। और हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान जो है इनिशिएट कर रहा है 3 पॉइंटर के लिए, और आकिब किक करेंगे। I think if it were left with Ben, he would have gone for a line out and he would have seen a maul formed at the line out. Pakistan should have gone for a fight. Shaz, I think they're alternating this. We don't have the same wind that we had last week, so I think this is a very kickable one. I don't want to jinx the kicker, so I'm just saying let's see what happens. 22 के अंदर है और आकिब की किक 100% जा रही है, इन्होंने एक में से एक की थी, देखते हैं। काफी रिलैक्स किक किया है। And we need to see the replay. They did ball poles के दरमियान में से नजर आई जाती हुई। Let's see what the referee says. No, he did not. It's not good. It's a 22 drop out. Thailand शुरू करेगा ड्रॉप किक के साथ। जबरदस्त किक। Good defense by Thailand. थाईलैंड के टीम बहुत जोश में लग रही है शेज। आज अगर हम देखें पिछले मैच के मुकाबला करें तो आज मुझे थाईलैंड बहुत एनर्जेटिक लग रही है। कंटिन्यूस थाईलैंड डिफेंस पे खेल रहा है। लंबा पास आकिब के पास, साकी ने डमी करने की कोशिश की। Nicely set up. Let's see if Pakistan comes out with the ruck. They do. आपको बताएं आज 41 डिग्रीज था टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम great defense by Thailand. They're on the बहुत ज़बरदस्त डिफेंस आ रहा है थाईलैंड की तरफ से। वो पाकिस्तान को ग्राउंड पीछे ले कर रहा गए है बजाय आगे जाने के। दाऊद के रक में से बॉल निकालेंगे। देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है पाकिस्तान टीम। उमैर खान ने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत लंबी किक की है। लेट्स सी अगर ये I think he was saved there by the post. I think if that one could have gone all the way. And this is what we see from Thailand in the first game, running from their own 22, very confident. Defense. I think that's where the strength is, Ben, and that's exactly where they've been cashed in the last game too. Yes, it was a game of very nervous Pakistan in the first 10 minutes and a very composed Thailand in the last 10. 10 minutes, correct. You sum it up nicely there. लंबा पास किक करके टेरिटरी गेन करने की कोशिश की। उमैर खान के पास बॉल जबरदस्त जाते जा रहे हैं। अभी तक टैकल बाय नंबर 8 बॉल उन्होंने पास कर दिया है। ओपन प्ले था लेकिन पाकिस्तान बॉल नहीं, रेफरी की कॉल नॉक हो गया पाकिस्तान की तरफ से। स्क्रम होगा और थाईलैंड की बॉल होगी। We see Yahya Bhatti and Salman Sheikh, two of our veteran players who are currently in the management of Pakistan Rugby Union. थाईलैंड के प्लेयर कुछ कंप्लेन कर रहे थे। Let's see. So the touch judge spotted something. He's looking towards Thailand.
So I guess what he's doing is looking for a number because he's going to give the referee a number. So he must have seen something off the ball. Now he's looking towards Pakistan side. So we don't know what's happening. Yeah, normally when they walk onto the pitch that serious, it means he's seen something very serious. So he's explained to ref what he saw from the sideline. Let's see what the referee, Mr. Akil, is going to do. Who's going to be in the naughty box? Let's hope there's no card. Yeah, that's all. Yes, totally. लेकिन क्योंकि रेफरी जो बीच में रेफरिंग कार्य होते हैं उनको सपोर्ट होती है 2 टच जजेस की जो कि उनके पैरल रेफरिंग को सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं. उनकी बहुत ज़रूरी होती है. कई दफ़ा ट्राई में भी कोई फाउल प्ले में कोई ऐसी चीज़ हो जो रेफरी जिस पे डिसीजन ना ले सक रहा हो तो वो अपने असिस्टेंट रेफरीज हैं उनसे असिस्टेंस लेता है. अभी देखते हैं उन्होंने पेनल्टी दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और थाईलैंड भी गोल के लिए जा रहा है. थाईलैंड दे आर ट्राइंग फॉर 3 पॉइंट्स एज वेल. बिल्कुल मिडफील्ड में है, 10 मीटर हैं आगे सेंटर लाइन से और इनका रिकॉर्ड अच्छा है. थाईलैंड का पेनल्टी कन्वर्जन इन्होंने पिछले मैच में भी स्टार्ट 3 पॉइंटर से किए थे. लेट्स सी. मैच के 10 मिनट ऑलमोस्ट गुजर गए हैं. कोई स्कोर नहीं है बोर्ड पे इस टाइम. आई थिंक ये बड़ी क्रूशल है कि पहले कौन स्कोर बोर्ड पे जाता है. वी हैड अ चांस, पाकिस्तान हैड अ चांस. किक का डिस्टेंस अच्छा है लेकिन क्लियर नहीं हो सकी, पोल्स के दरमियान में से नहीं जा सकी. दैट मीन्स का स्कोर अभी भी 0-0 ही है और ड्रॉप होगा 22 लाइन से. ड्रॉप किक से रीस्टार्ट होगा गेम दोबारा. और आज भी हम तमाशाई देख सकते हैं. शेष काफ़ी इन्वॉल्व है हमारी. भी कसीर तादाद में तमाशाई आए हुए हैं. व्हाट अ लवली ग्राउंड. पंजाब स्टेडियम का जो ग्राउंड है उन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है. रग्बी के लिए लश फील्ड है, सॉफ्ट फील्ड है. रेफरी ने दोबारा उनको किक करने की, लेकिन गेम प्ले ऑन है. आई थिंक Listen, I think he got another chance to kick. Yes, I think one of the Pakistani players rushed up before. Oh. There's drama there. It's normally when the ball touches a post, there's always drama because you have got 30 people who don't know where the ball's going. So I think that's it. So क्योंकि बॉल की शेप ही ऐसी है. The ball is shaped like that. You cannot predict where it's going to go. So that's what rugby is all about. Dance of the ball. I think there's some discussion. But it's now nervous times for Pakistan. Yes. It is. They were dominating the first 5 minutes in Thailand half, and suddenly the ball comes in their half, and crazy things happening right away. So. And I think Mr. Akil, the referee, is also having. It's only 11 minutes, and he's had a lot of challenges today. बिल्कुल. अब गेम जो है वो पाकिस्तान के 22 में आ गई है, बल्कि 5 मीटर पे आ गई है. प्रेशर पाकिस्तान पे है. अब उनका डिफेंस देखते हैं पाकिस्तान कैसा करता है और थाईलैंड अटैक कैसा करता है. स्क्रम में पाकिस्तान बहुत डोमिनेट कर रहा है. लेट्स सी. Thailand did very well in their half. Let's see if Pakistan puts up good defense to match. और लाइन में बॉल थोड़ा सा मिस हैंडल हो गया पासिंग में, लेकिन दोबारा अटैक करने के लिए आ रहे हैं. पाकिस्तान का डिफेंस हमें शुरू से ही सॉलिड नज़र आया है और अभी तक नज़र आ रहा है. लेट्स सी. नंबर 8 के पास साइड स्टेप करते हुए निकले. थाईलैंड लोगों ने जब भी बॉल लेकर आता है बहुत ज़्यादा लगता है जिस तरह और एनर्जी है बॉल में. और ये पेनल्टी अवार्ड किया है थाईलैंड को रेफरी ने. हम वही देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा जो है वही अपनी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा है. बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंजमेंट्स हैं पेनल्टीज़ की और जो कि नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल गेम का शुरू है. हमने काफ़ी पेनल्टीज़ रिसीव कर ली हैं अब तक. तकरीबन 13 मिनट का टाइम गुजरा है और हमें थोड़ा इनडिसिप्लिन. आपकी बात सही है मोहसिन. ग्राउस
Yes, Mohsen, but as you explained, you know, once you've tackled, you need to roll away. And then sometimes, you know, you just stuck there for a moment and it's perceived that you're not trying to roll away. I think that's what happened. His foot was stuck and he's got a new kicker. Yeah, he's got it. He's got a new Thailand kicker, yeah, puts a 3-point on the scoreboard. But he has a different kicking style from I think they've changed their number kicker 10, now. yes. So Thailand gets on the board Thailand with 3 points. yes पेनल्टी पे 3 पॉइंट गेन किए हैं और मैच दोबारा सेंटर से रीस्टार्ट होगा और लेट्स सी I think एक मोहसिन जो मुझे थोड़ा सा नज़र आया है वो पाकिस्तान के पास बॉल काफ़ी देर रहा है शुरू में, लेकिन वो एडवांटेज लाइन से आगे नहीं ले जा पाए। जब भी उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, थाईलैंड डिफेंस ने उनको थोड़ा सा पुश बैक किया। बिल्कुल थाईलैंड का बड़ा ज़बरदस्त हमने डिफेंस देखा है अपने 5 मीटर से लेके पाकिस्तान के 5 मीटर तक। अगर आप उसको कहें कि दैट्स अ वेरी गुड डिफेंस बाय थाईलैंड और आई थिंक वो अब पाकिस्तान के प्लेयर्स को रीड भी कर रहे हैं किस तरह की वो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। पाकिस्तान को इसको रीकाउंटर करना चाहिए। लाइन आउट बॉल पाकिस्तान के पास वक्त में तब्दील हो गया। लाइन आउट दाऊद गिल बॉल निकालेंगे। अली खान के पास निकल गए बहुत ज़बरदस्त साइड से लेकिन टैकल बाय थाईलैंड। अभी भी दाऊद गिल ने बॉल निकाला। खान Thailand defense is there. Now they're going to try to hold him up. His knees touch the floor. they will actually let him go. They want to That's Ali Ali Khan Khan again, I ज़बरदस्त believe. Can't leave him out of action. दाऊद गिल दाऊद गिल ने दोबारा बॉल निकाला। अहमद वसीम से बॉल टच में चली गई है। फ्लैग रेज हो गया है। पाकिस्तानी प्लेयर अभी डाउन है। अली अली शाहिद खान लग रहे हैं कि अली शाहिद इज अली डाउन। शाहिद हैं। किसी उनको ट्रीटमेंट देते हुए और थाईलैंड के भी प्लेयर डाउन है। थाईलैंड के भी एक प्लेयर डाउन है, उनके भी फिजियो अंदर आए हुए हैं ग्राउंड पे। शिज आज बहुत आई थिंक इट टच्ड 42 टुडे। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज फैक्टर। इट्स अ वेरी वेरी वार्म डे लड़के आपको indeed. ज़्यादा एग्जॉस्ट लगेंगे। हाँ जी And the wind is not there, so it Yes, feels even more. Yes, that hanging heat. It's that It hanging doesn't heat. go away. A bit of humidity as well is no help. इस सिचुएशन में समटाइम्स when a referee can take 4 quarters or 20, yes after 20 minutes, There's yes, and have a, break, a yep. water break. But nowadays in the modern game, there are interruptions where the water boys can come on. okay As we've seen, water boys can also carry instructions from the coaching side. we've seen South African South players Africa. actually a coach coming in as a water boy। पाकिस्तान के पास बॉल है। दाऊद गिल बॉल निकालेंगे। अली शाहिद के पास बॉल नंबर 1 शर्ट पहनी हुई है। दाऊद बॉल रिसाइकिल करते हुए अहमद वसीम साथ Good placement again. प्लेस किया। They go with the advantage line की again. तरफ जाएंगे। हमाद सफदर कैप्टन के पास बॉल। चार फेज 5वें फेज की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी I have to say, the forwards haven't knocked on the ball. They've really, it's not the same forwards that you saw last week. In the first 10 minutes, just when I said that. and Ben Oh no, I should your not say timing that. was perfect और I shouldn't say things like that. फॉरवर्ड से नॉक ऑन कर दिया है और The curse. स्क्रम मिला है थाईलैंड को। थाईलैंड का पुट इन होगा मिडफील्ड में। दोनों Okay, but टीमों- on the other hand, Mohsen, it's energy sapping for the defenders if they constantly run it at you and you have to get up and come around and defend again. plus the heat factor Plus the heat factor. yeah, so it's a tough game for these boys right now. But Just they are in incidentally, there. at the press conference, when somebody asked, "What do you think of the heat in Lahore and the Thailand
captain said we also have heat in Thailand. नंबर 8 का जबरदस्त बॉल, जबरदस्त great पास, break. good defense by Umar Khan, Could be ball lost. and But it's going to be a very slow ball, so Pakistan can organize their defense. थाईलैंड के पास अभी बॉल है, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं. I think रेफरी की विसल. बॉल सही तरह बाहर नहीं आ पा रही थी, तो लेकिन एडवांटेज थाईलैंड को था. स्क्रम डाउन अवॉर्ड किया है थाईलैंड को रेफरी ने. So I think that was a very sigh of relief there from the Thailand coaching staff. थाईलैंड के ऑफिशियल्स. So I think they're also very fortunate nobody can understand what the instructions are. Same On goes both for sides. us. On both sides. They don't understand Urdu, so I hope that's what Pakistan team has made moves in. Ball That out. is Pick up by brilliant. Saad. Beautiful जबरदस्त जाते हुए साथ सपोर्ट देखते हुए And he दोबारा still रिकवर की है बॉल. दाऊद को gets बॉल it back. जल्दी निकालना What a चाहिए. lovely लाइन आउट play by और slight unforced error there, knock on. गुड रन बाय साद. Saad What a lovely break by plays Saad. for Islamabad Gents, and he's been associated with the rugby and since under 19. As I remember, I took him with me to Philippines. Saad Arif, and he plays for Islamabad and he has represented Pakistan in sevens as well. Referee calls for a time off. Let's see. किसी भी फॉरवर्ड के लिए इस तरह की ब्रेक जो है, it is a feather in the cap. Oh yes. I think Saad did very well there. It was I think eye candy there. हमें सपोर्ट नज़र नहीं आई. हमने जब भी देखा है पाकिस्तान ने जब ब्रेक किया है तो हम सपोर्ट हमें नज़र नहीं आई पाकिस्तान की. जी, पाकिस्तान कि के एक, प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह की ब्रेक में उनको अगर साथ हों तो डेफिनेटली ये प्ले जो है किसी ट्राई की सूरत में आ सकता है. Because we also saw कि हमने देखा है थाईलैंड का जो डिफेंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है. Good Good scrum scrum, by good push by Pakistan. Pakistan team. Oh, what a great handoff. Offload there. Good Oh, what a tackle great Good tackle, there. brilliant. by Akib. Ball is knocked on. Number 11. Kopen, थाईलैंड के प्लेयर. बहुत अच्छी मूव थी Super थाईलैंड की tackle तरफ that- से. बड़ी ज़बरदस्त पासिंग नज़र आई हमें थाईलैंड की लाइन से. That was a super tackle that got us a knock on. That player couldn't hang on. और ये उमर उस्मान है, ये भी veteran player from Lahore Rugby Football Club. He's represented Pakistan on many occasions as well. स्क्रम पाकिस्तान का दाऊद गिल ने पुट इन किया. साद आरिफ बस बॉल्स. So they want the line breaker there. Yes. He's so confident. He's सेकंड फेज दोबारा आकिब के पास. बना रहे हैं थाईलैंड का काउंटर करते हुए. turnover रक्को. ball. लेट्स सी बॉल ले turnover लिया है ball. थाईलैंड. नंबर 8 ने बॉल रिसाइकिल करेंगे. पाकिस्तान डिफेंस में हमें बहुत बेहतर नज़र आ रहा है. Advantage there in referee. I think there were hands on the ruck. ओपन अंडर की free play. लेट्स सी. ओपन प्ले रेफरी कॉल्स इट एज थोड़ा सा इनडिसिप्लिन timing again, मोहसिन दोबारा से अपने हाफ में. आई थिंक थोड़ा सा टेक्स्ट बुक रग्बी अगर हम खेल लें और बॉल को अपने हाफ में बहुत ज़्यादा प्लेस ना भी करें और किक आउट करने की कोशिश करें उनके हाफ में, थाईलैंड के हाफ में. बिल्कुल हमें ये चीज़ काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि अपने जब प्रेशर आया पाकिस्तान टीम पे तो वो जो फाउल हो जाते हैं उनकी वजह से थाईलैंड को एडवांटेज मिलता है, जो कि अब दोबारा आई थिंक गोल किक के लिए जाएंगे. उमर खान रेफरी के साथ डिस्कशन करते हुए. और
थाईलैंड पेनल्टी किक के लिए जा रहा है जो कि 22 के अंदर है, बिल्कुल पोल्स के सामने है। करंट स्कोर जो है पाकिस्तान 0 थाईलैंड 3। और लाइव टेलीकास्ट के लिए हम फास्ट स्पोर्ट्स का शुक्रगुजार हैं कि हमें ये एंटरटेनमेंट देखने को मिल रही है। और ज़बरदस्त किक पोल्स के दरमियान से गई है, 3 पॉइंटर और गेन किए हैं थाईलैंड ने। रिप्ले में देखें, ज़बरदस्त किक। थाईलैंड 6 पॉइंट से लीड कर रहा है और पाकिस्तान अभी तक स्कोर बोर्ड पे कोई स्कोर नहीं कर सका है। और 22 मिनट्स गुजर चुके हैं। He almost kicked it out of the stadium there. अहमद वसीम गेम रीस्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान ने वापस ले लिए बॉल, ज़बरदस्त रग बनेगा। दाऊद गिल बॉल को रिसाइकिल करेंगे। अहमद वसीम साइड स्टेप करते हुए, कोट पुश पर अहमद अली खान। दाऊद शाह के पास बॉल और बॉल आगे लूज कर दी। थाईलैंड के पास बॉल किक कर दी उन्होंने, ज़बरदस्त टेरिटरी गेन करने के लिए। उमैर खान नॉक कर गए हैं और रेफरी ने गेम रोक दिया। एडवांटेज प्ले कर रहे थे थाईलैंड के लिए और डेंजरस था, लेकिन गुड डिफेंस बाय पाकिस्तान। I think that's great pressure by Thailand. They are taking their chances and forcing those errors from Pakistan. Pakistan needs composure at this stage, and they need to get their act together somehow and use whatever strengths they have to make a comeback. पाकिस्तान को डिसिप्लिन, जो गेम डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखना है ताकि वो अपना गेम प्लान पे काम कर सकें, जो कि आई थिंक मोहसिन जब भी थाईलैंड के पास बॉल आती है ऑन अ ब्रेक, वो बहुत डायनामिक लगते हैं अपनी लाइन में बॉल चलाते हुए। गुड टैकल बाय अली खान, गुड डिफेंस पे पाकिस्तान। रग बना है, कप्पाना बॉल निकालेंगे थाईलैंड की तरफ से। गुड अटैक स्ट्रेटजी बाय थाईलैंड और डिफेंस हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान का भी। आई थिंक रेफरी दोबारा एडवांटेज दे दिया। दैट्स hands in the ruck there, one could see that's a bit of an indiscipline there through Pakistan, so they again going for फाउल जो है वो इस तरह है, जो टैकल बंदा है जब वो बॉल प्लेस कर रहा होता है और अगर उसकी सपोर्ट आ जाती है तो जो ऑपोजिशन का प्लेयर है वो ही हैज़ टू लेट गो द बॉल और वो बंदे के साथ जो ऑपोजिशन है उसके साथ कॉन्टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो बॉल को नहीं डिस्टर्ब कर सकता। ये सीरियस ऑफेंस है जिसकी वजह से रेफरी ने अभी पेनल्टी दोबारा दी है, जो कि 22 पे है। और आई थिंक ये फोर्थ अटेम्प्ट करेंगे थाईलैंड के प्लेयर, जिसमें से 2 जो थी सक्सेसफुल थी और ये तीसरी जो है इसका देखते हैं थाईलैंड क्या करता है। थाईलैंड 6 पॉइंट से लीड कर रहा है। नज़र आ रहा है पाकिस्तानी साइड पे, बिकॉज वो जिस जगह पे ये पेनल्टीज दे रहे हैं वो बहुत और कन्वर्टेड है। थर्ड पेनल्टी कन्वर्टेड एंड थाईलैंड लीड्स बाय 9 पॉइंट्स। आई थिंक ये टेरिटरी जिसमें हम ये फाउल्स दे रहे हैं पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनल इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन ये नहीं, अपने जो 50 मीटर पे उनको जो फाउल्स हैं उन पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस पर आपको हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी 4 पेनल्टी किक्स कर चुके हुए हैं, जिसमें से 3 थाईलैंड कन्वर्ट कर चुका हुआ है। रीस्टार्ट हुआ है गेम थाईलैंड के पास, पाकिस्तान ने ले लिया है बॉल दोबारा
रेफरी की विसल, नॉक बाय थाईलैंड, पाकिस्तान का पुट इन। अली शाहिद टीम को काम डाउन का इशारा करते हुए कि they need to think about the game plan. I think they are not working on their game plan. They need to focus and get their acts right. Or So I expect a very strong scrum from Pakistan this one. Because the frustration comes in and then the forwards say, okay, the only way we can fix it is with a strong scrum. let's go. Good, steady scrum. I think the scrum is not an issue for them. They'll be dominating. That's Yes, a good उमर break there, खान के Umair. पास बॉल विंग पे जाते हुए good tackle by Thailand. Umair is a very seasoned player. He Without knows he's need played. to quick ball by निकाला. अली शाहिद के पास बॉल But they just swamped by those yellow jerseys every It's a time. quick और हमाद recycled सफ्तर ball जो है back. बॉल आगे गिरा दी. नॉक ऑन हुआ है. एडवांटेज प्ले कर रहे हैं रेफरी थाईलैंड को. I think हम स्क्वांडर कर रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज जो हमें थाईलैंड के हाफ में मिल रही हैं. क्लियर की. पाकिस्तान. गुड किक बाय थाईलैंड. थाईलैंड टेक्स्ट बुक रग्बी खेल रहा है. वो अपने हाफ के अंदर they're kicking the ball out, releasing pressure off their players as well by doing. हारून के पास, हारून ने रिसीव की थी बॉल. अगेन नॉक ऑन बाय थाईलैंड. पाकिस्तान की बॉल है स्क्रम में. काफ़ी तमाशाई हमें नज़र आ रही है. और Yeah, so Mohsen, what we see is that Pakistan, they look very strong when they're in Thailand's half. Then one little mistake, and then all of a sudden, for the next 5 minutes, we play in Pakistan's half. I agree, and we also see the body language whenever we make a foul is committed. We see a very different body language by Pakistan. That's right, and I think that's one thing that Thailand's just been doing. They show no emotions. They just keep on grinding, and that's why it was so unexpected the last game, in that last 5 minutes. पाकिस्तान स्क्रम जीता. अहमद वसीम के पास बॉल. I mean, हमें इंडिविजुअल स्पार्क्स नज़र आते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स में. फिर कोई एक अनफोर्स्ड एरर आता है और हमाद सफ्तर हम फिर गुड ड्राइव. रिग्रेस कर जाते हैं. दाऊद बॉल निकाल रहे हैं. अहमद वसीम. एडवांटेज साद आरिफ. लेट्स गो साद. साद This से is a great player as well. Pakistan हारून side. सपोर्ट Good करते patience हुए. there as well. Hassan, Ahmed Wasim, Aqib Good composure. He Javed. saw he didn't have any support That's there. right, and He no didn't let 50-50 go. pass. He just set it That's up. Ahmed Wasim. Faisal. Just hope the touchline is not going to win again. Referee was actually referee advantage play कर रहे थे. There was a. Let's see what referee says. Okay, let's find out. Mohsen, line out 3 points. or 3 points? I'm a conservative player. Yeah, I'd go same for with 3. me. That yeah. 3 points will just mentally change Yeah. everything. We We'll just say, need to okay, steady it a we're bit. on the Get scoreboard. Get on the scoreboard. Exactly. I think Thailand player is down. Game has been stopped. Time has been stopped. There's some serious injury with the Thailand player. Let's see. I'm the old school. I like Oh, rugby definitely. the old-fashioned way. I like the rucks. I like the mauls. I like the forwards big and strong going in. I think we are very close to the Thailand 10 meter. Right now, I think 3-pointer would be a better option. Definitely. And I will take the 3 points. I don't mind going for a line out. No, no. But let's not say anything about the kick. Let's not say this looks easy or something like that. Let's give him a fair There's no shot. wind factor, so Yeah. I think they're Yeah. going for the pool. And I'm so sure he cannot hear us. So yes. Or maybe he can. We'll find out. Oh yes, I think they're gonna tap and go. Or well, line the out. referee has not indicated. I think because time is off, they still have the time to decide. Well, we see the touch judge on the other side. I so think that Omer is might- coming, so he's going Yeah, for Umair goal. Khan No. is back, so that's Or maybe for touch. No, I see the touch judge still there.
So the referee haven't. Here comes the captain. Right. Captain's call. I think the moment that he would put time back on, he will ask Umair, the question. kind of a I think he's going to go for the kick. I just saw the tap there from the captain. Ahmed just said, okay, we see you know what to do. Kashif Khwaja on the field as well. It's a good time to take a sip. Definitely. I think this is the ideal time. We know 42 degrees out there. Oh, yes. Or perhaps it's dropped to 41. Right now it must be 38 to 37 degrees. 37. But the humidity would have gone up. Yeah, When exactly, the sun around goes down, the sunset. humidity goes up. Yes. It still feels like 40 plus, even That's if it's in right. 30s. So And if you tell that to people in Europe, Drop they to would, 37. they would say, "What the heck are you doing on the why field?" are you playing? Should be on the beach under an umbrella. Oh yes. We When- see some. I have a question. Usually, this region, we always have these fixtures in summers. That's right. I always wanted why these fixtures are in summer. Why don't we target winters? Okay, let me quickly explain to you. So in Asia Rugby, the calendar it's more or less a 15th in the first part of the year and 7th in the second part of the year. So, yes, why don't we have it closer to the winter? I think in this case, it's definitely still the effect of COVID. It's still the effect of some of the countries couldn't travel. Some of them said, give us a month, give us 2 months. Let's just watch this. They actually went for the line out. That's right. Did and they And lost the line out. lost the And it line was a out. crucial we get a Okay. penalty again. Not really. Now that's a different angle. Good. You can see work Ali wants from to Ali tap Khan, and go yes. there. Oh yes, the big boy has done his job. They're I think again the going for a referees line gave them out. Another chance to try it again. Okay. So I think once they get the maul running, This is going to be a that's more where we get the points. definite. But we need to make a maul first. That's correct. First have to get the win the the line line out. out. Lovely. Good throw in by brilliant Israr. throw in. Maul is failed. Forwards push in. Ali Khan has the ball. Maul is turned into a ruck. I think a pick and drive's coming. I Daud think. Shah has the opportunity. He picks and goes. I think Pakistan definitely Need to needs make to some go over the line. phases बनाए ताकि try line Get cross those कर heavy सके. bodies behind the ball carrier. अच्छी strategy Good पाकिस्तान की discipline side from से. Thailand so far. It's rock solid defense thus far, Communication. especially in their half. They've been Held up Held again. Well done, Thailand. Well done, Well Thailand. defense. Well Good defense, good discipline. by Thailand. let's see जबरदस्त if defense they किया take Thailand the की scrum तरफ से. over. पाकिस्तान I को think बॉल this नहीं part- लगाने दिया उन्होंने ट्राई लाइन पे, जिसको हेल्ड अप कहते हैं. और दोबारा स्क्रम होगा पाकिस्तान बॉल. This is the second time Thailand has held up in this game. I think this 33 gives minutes Pakistan up another solid chance to drive over with the scrum. So let's see if they're able to do that. They have a dominant scrum, so स्क्रम 5 मीटर थाईलैंड की 5 मीटर लाइन पे दाऊद गिल बॉल पुट इन they're doing करेंगे. exactly गुड that. स्क्रम Let's बाय see if they get a penalty in. पाकिस्तान. एडवांटेज दे There's रहे हैं already the रेफरी. penalty. बॉल That's आउट. Free ball. अहमद वसीम हारून को नीचे नहीं गिरा सके. Oh, बॉल दे lovely. दिया उन्होंने. Oh yeah, he's done और it. Question is, The referee was playing was already advantage, I playing think. advantage. So, I think ये हल्का सा फॉरवर्ड पास हो गया है और टच जज ने वो tackle थे इशारा कर शायद. दिया. or perhaps, yes, I think the referee must have deemed that as a proper tackle. So now I can see the referees already talking to the Thailand captain and saying, if it goes on like this, I may have to look into my sock for a yellow card.
another solid scrum coming in, hopefully from Pakistan. So पाकिस्तान को ये आइस ब्रेक करनी पड़ेगी. They need to break this ice. Well, oh yeah, They're Mohsen. on their Thailand's. They just need a line credit goes to line Thailand, breaker in the back line now. The credit goes to Thailand for a great defense. Was we haven't a seen defense. we haven't seen a try come in through the line in the first game as well. So Ali Shahid ने बॉल पास don't know. किया. साद yeah, ने he कोशिश was अच्छी almost थी. through. Good defense, Thailand Saad again. was almost through. बॉल बड़ी जबरदस्त Good बचाई. tackle there, Thailand. दाऊद गिल बॉल निकालेंगे. अहमद वसीम, हारून, आकिब ने That's बॉल where we बचाई. I think the referee's going ग्राउंड to पे ही go टैकल back कर दिया there. उन्होंने. And I'm sure he's going to put his hand in I his think, pocket yeah, now. it's about- I this think is he's what, going like, to the- call the captain and tell him, I have warned you, I have spoken to you. I think that's clear domination by Pakistan in the That's scrums it. and all, and the referee has to take a. I don't know if he's identified a player or he could be the captain. No, so he's not put his hand in his pocket. But I think he was penalty very again, clear. so go for a scrum again, Pakistan. Definitely. Oh yes. Yeah, there you go. We love scrums. I know. That's 36 minutes gone, 4 minets to go for the first half. Yes. And we had two Pakistan held up needs tries to- from Pakistan. Oh yes. So that score could have been so different. Oh, yes. It was so marginal. पाकिस्तान की भरपूर कोशिश, लेकिन थाईलैंड का बहुत ज़बरदस्त डिफेंस है जिसकी वजह से अभी तक वो पाकिस्तान ट्राई नहीं कर चुका. दाऊद गिल ने बॉल निकाली. अहमद वसीम, हारून, आकिब, उमर खान के पास अभी भी बॉल है. साइड पे फेंकते हुए उमर खान के पास, और ज़बरदस्त डिफेंस बाय थाईलैंड. and that's, we have to Amazing give it defense to- by Thailand. We have to I give would it to say. Thailand. They're defending like there's no Pressure, tomorrow, pressure. and They've taken the pressure. And बड़ा अच्छा this pressure लिया sends उन्होंने. such a negative effect on the opponents as well. Well, they're trying to go over the finish line, or and they're unable to convert it into any worthwhile points. It seems that things are working out so well, 3-4 times, and then And then it there's just that doesn't- one incident where the ball gets knocked down. Running the ball maybe is not our strength, and the scrums and the lineouts and the mauls are, I think. साद आरिफ से बॉल आगे गिर गया. It's a knock rare error from Saad. He's had an outstanding game thus far. Good breaks by Saad and Ali Khan. And he's held his nerve. He's done beautifully well thus far. Is that? I think the Is that referee the has half? called, for the first half. आप जैसा देख सकते हैं लड़के बिल्कुल एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, थक गए हुए हैं हीट की वजह से, और गेम भी हमारी रग्बी जो है इट्स कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. सो इसमें आपका लोअर अपर बॉडी दोनों बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एक्सर्शन, और आप एग्जॉस्ट हो सकते हो. जैसे आप देख सकते हैं थाईलैंड के प्लेयर ज़मीन पे बैठ गए हैं और पानी पिया जा रहा है. We were in a discussion with Ben why summers. Oh, the summers, yes. So I think in this specific year, the other teams that could have played in this tournament had COVID restrictions up to the point where they would have to spend 2 weeks back in their home country in hotel isolation. Being amateur players, it's no union, no amateur player can afford that. So, and I think that's just a matter of
that has been postponed and postponed, and yeah. We will like to request the Asian rugby, you know, these games are to be played in winters. That's right. That's what my. Yeah. So hopefully next year, no COVID. Hopefully. Alright, welcome back. जी हाँ, एक दफ़ा से फिर आपको खुश आमदीद करेंगे। एशियन रग्बी डिवीज़न 2 फाइनल मैच, टेस्ट मैच आज खेला जा रहा है। फाइनल पाकिस्तान वर्सेस थाईलैंड के दरमियान, और यहाँ पर हाफ ब्रेक का वक्त हो चुका है और 9 स्कोर करने में कामयाब हुआ है थाईलैंड। पाकिस्तान अभी तक 0 स्कोर करने में ही कामयाब हुआ है, और इसको हम कामयाबी कहें या नाकामी कहें, ये तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। और वेरी डिसअपॉइंटिंग यू कैन से के पाकिस्तान की तरफ से आज खेला गया है अभी तक। वी हैव विद अस मिस्टर बेंजामिन, वेलकम टू द फास्ट स्पोर्ट्स once again. Thank you very much. And how do you see this performance of Pakistan? I mean, very disappointing as compared to the first match. It is definitely not a thriller. Yeah. That's the first thing I would say. Secondly, I would say there are 23 Pakistani players there very disappointed with themselves. Because, you know, rugby is such a marginal game, Yeah. the way that the ball can bounce any side, firstly. And we saw 2 held-up tries where Pakistan actually took the ball over the line. Yes, exactly. But brilliant technique from Thailand, making sure the ball doesn't touch the floor. So I can imagine the frustration in the Pakistan But side. when you see the body language of both the teams, the Pakistani players were little down. I mean, what's happening in the ground? I don't know what's going on in their heads, but if you read the body language, I think it's a matter of disappointment. Okay. You work so hard. We've counted so many phases that they were so good, and it's like brilliant play, brilliant play, going on, and then all of a sudden there's just the tiniest of mistakes. And it's not a matter of 1 or 2 people that have made the mistakes. I think all of them, if the coach would ask them, put up your hand if you think that you've made small mistakes that let the team down, they would all be part of it. So I would say, I hope that we see them the way that they came out in the first game after halftime. Yes. Because that was a different team. And what was the speciality of Thailand team today? They were so managed and so disciplined. Very disciplined. At one stage they were not that disciplined because we saw that the referee had some serious talks with the captain, and, Okay. and from our side we were thinking that could end up with a yellow card against Thailand. Okay. But overall they just capitalized. But if we see the performance, so Pakistani players, they did so many unforced errors. So how you see these unforced errors? We saw these errors in the last game as well. They were not fully prepared, you think? No, definitely fully prepared, I do believe. But I think what they do is they lack patience. Okay. And patience comes from don't pass a ball that you think is going as a 50-50 chance of reaching the target. Okay. Go for a ball that you know is going to reach. So that could be shorter passes. I would just say, play a little bit more conservative. Psychologically, today Pakistan was not up to the mark. If we see, like in the last game, they were very dominating, even though they lost the game. But today, they were not up to the mark in some departments. So, what do you think they were actually lacking in today's game? In today's game, it's just concentration, I would say. And I think sometimes you put psychologically, perhaps they put the pressure on themselves. Perhaps they are psyching themselves out. Perhaps they are nervous. Okay. Because they've got the crowd, they've got the television. Exactly. In their backyard, and all of a sudden, small mistakes
become big mistakes, and the score is 9-0. And what do you think in the second half? Pakistan should come with some change strategy, or they should play like they were playing? I think they should just play like they've been playing. I would just say perhaps in the backline attack, perhaps have a different strategy. Okay. Perhaps not try to get the ball all the way out to the wing, because Thailand's defense is good, and I'm sure they've got more speed in the backline than we believe. But so whenever Pakistani players enters to the Thailand side, they kick the ball and just release the pressure. That's the exit strategy. Yes. So yes, perhaps we can. We didn't see that thing. No, we didn't. We didn't see that. We didn't see that. So perhaps, perhaps you're right. Perhaps we could see some little bit more territorial kicking. Okay. From Pakistan side. It would take the pressure off the forwards, because the forwards are working very hard, and it's 37 degrees out there. Exactly, Jiha. We have the second match and the final match between Pakistan versus Thailand, and Thailand once again leading with 9 score. Pakistan अभी तक कोई स्कोर नहीं कर सका, और we are very hopeful कि second half में जो है पाकिस्तान अच्छी performance, winning and losing apart from the game, but you have to give your 110% for the game, and we are very hopeful. Pakistani players बहुत अच्छा भी perform अपनी तरफ से पूरी effort कर भी रहे हैं, और we are very hopeful कि वो लीड करने में कामयाब होंगे. पहला मैच भी थाईलैंड ने जीता था, 15 और 20 का स्कोर था पहले मैच में, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी. आज वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं देखने को मिल सकी. मिस्टर बेंजामिन, आई वुड लाइक टू आस्क यू के what do you see, like what will be the strategy for the next half of the Pakistani team? Like Thailand looks more prepared, and they've done their homework very well. Pakistani, what I see, but you are the expert, you can tell the exact. Pakistani was not prepared by their self, but not read the opponent. I think so. I think, it's the small mistakes. I would scrum like they have scrummed. Yeah. Because I think if they keep on scrumming like that, they could get another, perhaps 2 penalties just from their dominant scrums. I would like to see lineouts, them alternating short lineouts perhaps. Okay. And longer lineouts, that's the one. Of course, we're all waiting for that lineout more. We saw twice. The score could have been 10-9. The score could have been 17-12. Okay. You know, so if those two tries were scored. So there is still chances. Oh, definitely. I would perhaps not get the ball out all the way to the wing. I would most probably get one of the centers to straighten. Thank you very much, Benjamin. Yes, match is about to start, second half match, और we are very hopeful. अभी दोबारा से आपको लिए चलेंगे हम पंजाब स्टेडियम, जहां से आप second half का खेल देखेंगे, और हम आपको दोबारा से इस हाफ के बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में ज्वाइन करेंगे. ये स्क्रम अवार्ड होएगा to Pakistan on the center line. Okay, Mosen and Shaz, I think when we were talking about alternating play, I think this next scrum would be interesting to see what is Pakistan going to do with this ball. Are we going to see number 10 try to gain territory and kick it, or are we going to see the same where the ball goes to the wing? I think they need to change the strategy, as you suggested, Ben, a bit earlier. I think that kicking out in their halves would just be the right thing to do, maybe. दाऊद के बाद उमर They've got a खान good break भागते हुए here. मैंने बॉल किक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके. I think nevertheless it was a very good play by Umair and all the others who assisted him earlier. And Pakistan has started on a good positive note the second half. Yes, if you have a mobile number 8 that can gain 10, 15 meters and then give a quality ball to the rest. So that's another option. That's exactly what that's what we just witnessed. Number 8 अली शाहिद ने बॉल उठा के दाऊद उनके सपोर्ट पे थे, और
They've gained Ben a little territory as well, as you were assisting. Good to see them talking. That's right. I see a little bit of a different body language there. Yes. That was our strategy. Yes, I think Ahmad the seriousness in his discussion with his forwards. थाईलैंड का स्क्रम है, थाईलैंड पुट इन करेंगे, रत्ना ने बॉल डाली, पुश बाय बॉल आउट, अच्छी रन, दाऊद गिल भागते हुए, जबरदस्त डिफेंस टैकल दाऊद की तरफ से, थाईलैंड की सपोर्ट, गुड डिफेंस बाय पाकिस्तान। अभी भी थाईलैंड के हाथ में बॉल है, बैक्स में चली गई है, किक करने की कोशिश की लेकिन बॉल उमर खान को लग के बाहर गई है। लाइन आउट होगा और थाईलैंड की बॉल है। we've seen Ben, now we see Thailand in a very energetic phase as well, so Pakistan needs to wake up and they need to score a try, need to put a score on the board. That's right. I'm sure Shaz is going to say we should have taken that 3 points earlier, which I still believe would have changed the psychology. Yes, but you're right. You're very right, Mohsen. They seem to have a lot of speed amongst their forwards. I mean, that number 8 ran like a back. Yes, and he's been running since day one. Yes. He's kind of a playmaker. He goes, he breaks the line. Thailand also is unable to support him. Otherwise, yeah. Sometimes it's such a surprise for his teammates because he's just running away. Yes. This is okay. This is a good. Pakistan ने जीत लिया है, pressure. दाऊद गिल ने बॉल निकाली, But लूज then on बॉल the हो other गया है। hand, they're putting the pressure on उमर themselves खान ने in that बॉल back पकड़ी, line. अभी भी बॉल के साथ भाग रहे हैं। थाईलैंड के लड़कों को धक्का देते हुए 4 लड़कों को उन्होंने थाईलैंड के प्लेयर को पुश बैक किया है। Kick it out. और अब बॉल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थाईलैंड प्लेयर बॉल के लिए कॉन्टेस्ट करते हुए, अहमद वसीम ने क्लियरेंस किक की है और देखते हैं, और गुड किक, बॉल क्लियर हो चुकी हुई है। क्लियर स्ट्रेंथ्स हैं पाकिस्तान के, जो पैक है और जो हमारे लाइन आउट्स और स्क्रम्स हैं उसमें हमारी बहुत डोमिनेशन है। लेकिन जब भी थाईलैंड के बैक्स के पास बॉल आती है वो बहुत डायनेमिक तरीके से बॉल को मोहसिन बॉल को लेकर चलते हैं और हमेशा हमें लगा है जब भी उन्होंने बॉल अपने लाइन में चलाई है that they've gotten breaks there. बिल्कुल, वो थाईलैंड इज़ वेरी सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द लाइन, बट जो हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमेशा उनको काउंटर कर लेता है, लेकिन शुरू से ही थाईलैंड की स्ट्रेटजी रही है और उसमें सक्सेसफुल रहे हैं बहुत। वो लाइन आउट है, थाईलैंड की बॉल है, थाईलैंड नंबर 2 पुट इन करेंगे। पेन बॉल को पुट इन करेंगे, नंबर 2 शर्ट में खेल रहे हैं थाईलैंड की तरफ से, पाकिस्तान के हाफ में है। Do you think we could get an up and under here from Thailand, number 10? He's quite skillful in his kicks. Perhaps for his wingers to put pressure on the back I three. think they will in the Pakistan. second or the third phase. थाईलैंड ने बॉल जीत लिया है, बॉल ड्राइव करते हुए रक बनाया, Loop around, Lovely it's an change of extra. hands. अच्छी बॉल साइड स्टेप करते हुए विंग पे बॉल निकाली। पाकिस्तान का डिफेंस अपने बिल्कुल टोस पे है, 5 good to मीटर लाइन watch. पे बॉल जीत लिया है पाकिस्तान ने, आके पास बॉल है। Well done, brilliant. But good hands from Thailand. Yeah, it बहुत was ज़बरदस्त lovely पासिंग to है watch थाईलैंड की that. तरफ से। बॉल दोबारा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उमर खान की ज़बरदस्त Great, It किक is a और good बॉल kick to क्लियर। get and out the of pressure trouble. We could see a very well. quick throw in. I think the Thailand players, yep,
बॉल That's इन it. प्ले है, बाहर नहीं गई। That's the 7 स्टार style. बॉल के पीछे क्विक लाइन आउट ले लिया है मोहसिन। क्विक टैब लिया है, क्विक बॉल इन लिया है लाइन आउट से, ग्रेट टैकल देयर। और दोबारा उसी Wrapping जगह पे tackle, आके yes. उसी जगह पे रत्ना ने बॉल निकाली थाईलैंड के, अली खान ने बंदा पकड़ा हुआ है थाईलैंड का। रत्ना का बॉल पास जबरदस्त। थाईलैंड फेजेस में थर्ड फेज में आ चुके हुए हैं। पैक्स को बॉल निकाली, दाऊद शाह टैकल करते हुए, रेफरी की विसल। I think the referee is looking for a specific player. He's trying to I look think at the he's number. searching, He saw that push. Oh, he saw something off the ball. I think we got a first yellow of the game Wow, to a it's- Thailand player. Number 10. That's Arini. Yeah, and that's the kicker. Yes. ये इन्होंने फाउल किया है और जिसकी वजह से सीरियस ऑफेंस था। रेफरी ने उनको येलो कार्ड दिया है। 10 मिनट के लिए वो सिन बिन में चले गए हैं, जो कि अब थाईलैंड 14 प्लेयर्स के साथ गेम खेलेगा। जिस पाकिस्तान ने क्लियरेंस किक की जो कि क्लियर नहीं हो सकी पेनल्टी की। गेम ऑन है। Vital to get touch there, Umair. थाईलैंड क्लियर करने में सक्सेसफुल था और लाइन आउट होगी। पाकिस्तान की बॉल है। पाकिस्तान को ये 14 प्लेयर का जो एक एडवांटेज है उसको यूटिलाइज करना चाहिए और देखते हैं वो उसको किस तरह करते हैं। Yeah, Mohsen, you're right. That extra player, in some of the competitions like the Super Rugby competition, it was calculated that the opposing side normally scores on average more between 7 and 14 points if they play 15 versus 14. So Pakistan has got 9 minutes. लाइन आउट जीत लिया है, मॉल बनाया है, Crucial मॉल line-out to पुश win हो रहा there. है, जबरदस्त पुश पाकिस्तान की तरफ से। रेफरी ने Oh, पेनल्टी दे दिया है। कोई टैब Still लिया full थाईलैंड of की तरफ से। energy, Thailand forwards. they look so dynamic going through the line. It's The steps are the next. Oh, that's going to be. That could also be a card. I think the ref is going to stop his watch. That's he's unfortunate. going So it's for going his to be a pocket, game of two 14 थाईलैंड is के प्लेयर aside. से कंप्लेन करते हैं और येलो कार्ड मिल गया पाकिस्तान की टीम को। आई थिंक इट्स That's right. Just a deliberate knockdown. that was so unnecessary. Pakistan had a clear advantage there. आकिब को मिला है, आकिब सिद्दीकी को, जो कि 12 नंबर शर्ट में खेल रहे हैं। उनको येलो कार्ड हो गया हुआ है क्योंकि वो उन्होंने फाउल प्ले किया है। नंबर 9 को जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, नंबर 9 जो है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, और लेकिन उन्होंने उसके बॉल पे हाथ मारा है जो कि रेफरी पहले भी वार्निंग दे चुके हुए थे। दैट्स व्हाई इज गिवन अ येलो कार्ड और थाईलैंड विल गो फॉर अ पेनल्टी कन्वर्जन अगेन। दैट्स अ 5th अटेम्प्ट जिसमें से 3 सक्सेसफुल हो चुकी हुई हैं। Sort of a longish kick, but smack in the center. बिल्कुल ये उनके किकर नहीं है। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। बीस नंबर शर्ट में किक की अटेम्प्ट, डिस्टेंस अच्छा लग रहा है और कन्वर्टेड। What a lovely kick. Thailand and cashing on whatever opportunities coming their way. बिल्कुल शेज और इस टाइम थाईलैंड जो है बहुत कूल 12 हेड के पॉइंट साथ से खेल लीड रहे कर हैं, रहे हैं बहुत और कूल हेड के साथ मोहसिन। पाकिस्तान की गलतियों को सही यूटिलाइज कर रहे हैं वो, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। अभी भी उनके पास ऑलमोस्ट 32 मिनट्स हैं ताकि वो स्कोर कुछ कर सकें, टीम के अंदर कुछ एनर्जी आए। और अच्छी किक, बॉल
Unforced error, Thailand player से. I mean, we can see the the players exhausted due to the. Oh, definitely. These little mistakes will creep in. You're right. Correct. So now, again, as we've said so many times in the last 48 minutes, ideal platform for Pakistan to attack. So what's the question now? So now they're playing with 14 versus 14. So there's only 8 back, 6 backs. Yeah, bit of ground to run as well. There's more space now. Yes. And they have a strong. I mean, it's sort of an uncontested scrum, anyways. Clear domination. There's an opportunity. Man is. Oh yes. That's a try. That should be a try. This is the first. You can see Finally we have Pakistan with a lovely try into the back. Umair set it up beautifully well for the wing. Also, I think it's exactly what Shaz said. One less player in the background on both sides, and all of a sudden there's so much more space. Oh yes. Yeah, and you just get the ball through the hands. We have seen changes from the Pakistan side as well. Number 9 is changed. There's no substitute for experience. We've seen all the experienced players, and especially in the Pakistani side, to deliver whenever the ball is in their hands. It always looks that it's a very dynamic play. Suddenly it becomes dynamic. They don't normally do any unforced errors, and they seem to gain over the advantage line all the time. So उमैर खान ट्राई होने के बाद अब एक बोनस 2 पॉइंट्स के लिए किक करेंगे जो कि पोल्स के दरमियान में से जानी चाहिए और we have seen Umair kick the difficult kicks in the and last I game. hope Ben this is the difficult one From he got one smack from the sideline. From the sideline. Umair अपनी strategy kick के लिए Let's see. and converted. Okay, so we've got a 5-1 try. Yeah, so जबरदस्त किक उमैर की तरफ से जो कि हमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए हैं. Not only did he create this try, but he got 2 more points for his side, for his country, and that puts Pakistan on the scoreboard with a 7-pointer. Thailand 12, Pakistan 7. Thailand restart करते हुए game. Oh, that's a beautiful tap back. Tap back by Thailand. Good wrapping touch. अफजल का अच्छा टैकल. पेनल्टी दे दी है रेफरी ने. डाइव इन का. डाइव इन मींस कि आप रक की सिचुएशन में your back should be on a very Right, Umair get Pakistan touch. क्लियर नहीं हो सकी थाईलैंड के पास बॉल. थाईलैंड क्लियर करने की कोशिश करेगा और क्लियर कर दी है. इट्स अ लाइन आउट. पाकिस्तान बॉल. डाइव इन मैं आपको बता रहा था शेष के डाइव इन होता है जब रक के अंदर जो फर्स्ट पर्सन आता है एक्चुअली उसकी जो बैक है इट शुड बी ऑन अ वेरी 90 डिग्री एंगल जो कि बिल्कुल ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिटी मिले उसको कंटेस्ट करने के लिए. अगर उसको रोका जाए तो उसको डाइव इन कह देते हैं. उसको बॉल को ब्लॉक किया जाता है जिसकी वजह से सीरियस ऑफेंस है. हमें पेनल्टी मिलती है ऑपोजिशन को. लाइन आउट पाकिस्तान बॉल. क्या सब बहुत सीरियस कमेंट्री कर रहे हैं. मैं यहाँ पे चाहूँगा कि पॉइंट आउट करना कि Umair needs to go and thank the Thailand players. This is the second time they bailed him out. Yeah, they bailed it. बॉल की फिर दोबारा कोशिश. असरार के पास बॉल. अफजाल ने ली स्टार से और a nice hand off there. हारून से अहमद वसीम. Play on. He's playing an advantage there. Whistle. Slight knock on there. Unfortunate. अगर हम देखें if we see the passes thrown because there are a lot of knock-ons, though the players receiving the balls they are below their knees,
So that's a kind of a... It's either a rush, I think it's a rush pass, or the fact is that they're passing a little bit too long. Last week we saw passes getting knocked on, and we thought it was the wind. We thought it was the wind factor that they, but you're right, Mohsen, the passes are going down. I think it's just a rush. It's just the Thailand defense that's always in their faces. You see, this is what, and this could be a scrum penalty. I think it, yes, definitely. Sure is about time. Mohsen, this is what. This Azan is brought to you by أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ए अल्लाह, ए इस दावत कामिल और हमेशा इसके नतीजे में अदा होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उनसे वादा फरमाया, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफाअत से बहरामंद फरमा। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम
20 minutes, 24 minutes of the gameplay, anything happen is, and that's what the game is all about. I think Azan? I think it is. That's right. They're taking some. I think it's a short water break. Yeah, it's definitely prayer time. And I think it's an Azan break. Correct. And I don't think anybody would complain about a water break on Thailand side. Nobody would mind a sip at this time. With the seat, it's a welcome break, whichever way it comes. So Daud Shah. Forwards have played important role again, Ben. Throughout the game today, we have seen forward in play. We've seen mauls, we've seen phases in ruck, we've seen 5-meter pick and goes. So, how you predict the last 5 minutes? More of the same, I think so. I think more of the same. We've seen a change in scrum half, and I think perhaps, personally, what I would want to see is attack that 12 channel. We've seen some strong running into the 12 channel. चुमजे ने गेम रीस्टार्ट की, हारून जबरदस्त हिट करते हुए, पाकिस्तान के पास बॉल है, अहमद वसीम निकालेंगे, गुड पुश बाय थाईलैंड, काउंटर रख कर रहे हैं, बॉल जीत लिया है उन्होंने, लेकिन रेफरी की विसल. I think with the counter ruck, somebody came from the side, it's just not over the ball. Okay. Let's see what he does here. Man needs to clear his balls. He needs to catch his angles right. Finally, he did. He gets a good one. But the ball came back in anyway. No. It went out and came back. Kraus, you're getting too excited, mate. Okay. Yes. I personally would think don't rush for the line out. Take your time. Ahmad, speak to the boys. Decide what we're going to do. Make sure the message gets to the backs. Yep, they know he's just given his instructions there. वो बेंच सजेस्ट कर रहे हैं कि समाद कैप्टन जो है वो टीम से बात करें, माइंड कूल रख के खेलें. Pakistan is in a good territorial position to do something. Ball throw in. It's Ali Khan coming in. 10 channel with a forward. That's good. अफजाल बॉल निकालेंगे, साउथ पंजाब से ताल्लुक है इनका, बॉल पिक एंड गो किया जबरदस्त. That was unexpected. You can't do it every time, but once in a game. More of the same. They land exactly at the same point again. But, gentlemen, I just want to remind you of the 5 points difference. A win does not guarantee anything, so it's that 5 points. Current pressure, just made us forget everything. We were just focused on the victory right now. But it is an important point. We need to score win with more than 6 points. That's correct. And that's what the team Pakistan is trying, and we see a great, defense and play by Thailand as well. Thailand has displayed great defense earlier as well. Let's see if Pakistan can find a way through. Pick and go by good drive there, gained a few yards. अफजाल forwards को pick and go की guidance देते हुए, हमाद सफदर pick करके बॉल उठाएंगे, hit किया, place किया. We thank Fast Sports for all this excitement, entertainment, live broadcast. Referee ने whistle बजा दी है. I think there was an obstruction. Scrum call है. Thailand का put in होगा. Change,
Thailand has gotten the ball. It's a scrum. Thailand put in. डेफिनेटली बॉल क्लियर करने की कोशिश करेंगे. The referee is not happy with that scrum. I think they perhaps need a little bit more distance and go lower. I think Thailand definitely tries to delays the scrums because From it's not the there. next 19 minutes they can slow बॉल it जीत down. दिया है अफजाल के पास. Pakistan's won the बॉल scrum. निकाला. फैसल आ Pakistan चुके has हैं won a ग्राउंड Thailand में. scrum. रेफरी ने कहा पेनल्टी दी. This Go is- for three. Go for Go three. for That's it. what everybody's saying. Go for three. The रेफरी ने referee's making बैक sure they go किया back है. Get 10 10. more. There must have Get been 10 a more. yeah. All right. This is a great opportunity again for Pakistan to. And they're going to go for a line out. And as we said, Ben, we love malls. No, we all. We are going to go for a mall. Okay. We can see the smile. Oh, we can see smiles for the first time. I told 60, you they love 62 malls. minutes and somebody in Pakistan's team is smiling. So there is, yeah. Okay, definitely the body language is totally different. Seems to be a lot of calm now. सरार की बॉल है. बॉल थ्रो इन करेंगे. बिल्कुल थाईलैंड के 5 मीटर पे लाइन आउट है. और देखते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होती है. That's The a line-outs beautiful have line been out. Maul, so yes. good. The throws, the jumps, Good push but by brilliant Thailand. by Thailand. Good defense by Thailand. Brilliant by Thailand. Still the maul is active. Ali Khan के पास ball. Set up. Slower ball. This will most probably be a pick and drive. Let's see. Thailand's ready for it. I can assure you Yeah, that. both They go ends covered. nice Yes. and low. पाकिस्तान अपना टाइम लेते हुए दाऊद शाह बॉल के साथ. गुड डिफेंस बाय थाईलैंड. अपने 5 मीटर पे. Pakistan is Amal inching Safdar. forward. अली खान की बारी पिक एंड गो करने की. जबरदस्त पुश. Oh, that is a ट्राई के try. लिए खुशी. Could be a try. It रेफरी ने is. दे दी. Oh, definitely. जबरदस्त It is. ट्राई What a- फॉरवर्ड की तरफ से. What a turn around. What a turn What around. Well, those Such a tumultuous backs, those forwards have just done. बहुत They were- जबरदस्त स्ट्रेटजी. Pakistan has found their strength. They're not Exactly, the using confidence, the line. yeah. The confidence has come in. And they know if they have to win this game, it has to be through their forwards. That's it. And that's exactly how they're executing it. But they've made it very difficult for themselves in the first half. Yeah, it's Yeah. some of their But all game. of a sudden, so since half-time, 17 points scored by Pakistan, 3 by Thailand. Correct. I think Even I'm nervous. I'm going to have a sandwich to ease myself. So what would the message be from the Thai coach now? Play in their territory? what I've noticed is Play when expansive. they've been talking too much to the ref. We could see the advantage Pakistan gained on the last try they made. The referee made That- them go 10 meters back. I think they've Exactly, been that talking extra too 10 much. meters Yeah. gave them They a need to try. get their acts right and work on their game plan and do not intervene with the referee's decisions. Suddenly it's change of roles. There is And converted by Umar Khan. We are 7 points. 7-point lead for Yeah. Pakistan. So on aggregate, a 2-point lead. I think from now on we'll just look at aggregate. Because, but on the other hand, Shaz and Mohsin, if the scores are level on aggregate, they will go at the number of tries each team scored. So in this game, Pakistan scored 3 tries already. पेनल्टी मिली है थाईलैंड को बिल्कुल पाकिस्तान की 22 लाइन पे. रेफरी ने इशारा किया है पोल के लिए किक करेंगे. उनके नंबर 10 जो सिनबिन हैं प्लेयर वो वापस आ चुके हुए हैं जो कि उनके मेन किकर थे और अब वो बिल्कुल पोस्ट के लिए किक करेंगे. और अभी तक गेम जो है 65 मिनट्स की ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है और हमारे पास 15 और मिनट हैं. 15 more minutes for the game play. नंबर 10 जो हैं So थाईलैंड के
एरानी बॉल के लिए पेनल्टी कन्वर्जन के लिए ट्राई की है। किक का डिस्टेंस और हाइट अच्छी थी। लेट्स सी अगर कन्वर्ट हुई है कि नहीं हुई, रिप्ले में देखें। Looks good to me. Yes. Yes, and penalty has So- been converted. So That should be 19-15 then, if they kick off from there. So that means 1 point, the aggregate 1 point for Thailand Thailand. 1, Pakistan 0, yeah. Yeah. another same game को restart करते हुए Thailand ने good tackle by Pakistan, pressure डालते हुए Thailand पे। That's great Good tackling tackling there. by They're losing Akib. ground, Thailand. They need to clear the ball from here. Long pass, clearance kick, लेकिन बाहर नहीं जा सकी। उमर खान ने बॉल पकड़ी Great हुई है। hands, Omer. उमर Okay, now he Good needs tackle support, kiya set gaya. it up. Yeah, Thailand's needs going to to counteract place this it. one, like they do with these Thailand ones. पुरजोश नजर आ रही है अपना। अफजाल का पास, दाऊद शाह, फॉरवर्ड्स के बाद बॉल। अफजाल बॉल निकालेंगे। अफजाल्स Ben is from South Punjab as well. Ah, that's a bit clever. Oh, that was Interesting. he held back. Okay. Referee call, knock on. Is that a penalty? Or I think that's a penalty. I think there was a little kick, and then the one who received the ball was in front of the kicker. Is he Even going if for it was goal? half a... He's going to go from the 50-meter line. I think he's trying for the goal. I think he's just taking time because he knows they He knows on exactly one what point they're- up, and Arini is going to go for the poles. Ben is correct. They know exactly what the situation is. they don't want to play. They don't want to. They don't want to line out now, because there's a chance that they will be robbed of their own ball. So this is it. Correct. I think that could also be और the instructions. जबरदस्त from किक the है। sideline. बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्राउंड में से किक करने की कोशिश करेंगे। बिटवीन द पोल्स बहुत डिफिकल्ट किक होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस It'll definitely be the hero. अच्छा है और Can you- converted। Oh my goodness! Oh, What a that's kick! Excellent। Okay. रीनी की बहुत ज़बरदस्त किक 50 मीटर से पोल्स की तरफ और 3 पॉइंट गेन किए उन्होंने। Like fortune's the brave. Well, he always had the distance, Oh yes, so and we could see the confidence in him taking this risk of kicking it from the mid of the ground. So the points are now 19 Pakistan and Thailand 18. This is the 1 point difference. Ahmed Wasim start करेंगे दोबारा game. Drop kick के साथ ऊंची kick that is a and brilliant touch kick. में बहुत ज़बरदस्त kick। Yeah, बहुत it's therapy brilliant that he kick किया उन्होंने। alternates the hanging kick with this one. I'm sure that winger did not expect the ball at all. Ben is excited for that kick. Yes, he it's is amazed great to that see right- because as Shah says, you know, right kick at the right time. yeah, Thailand की kick है, ball throw in करेंगे। It's Number a vital 2 line out being won by We Thailand. see They'll set Thailand it up and making a kick it maul. out. and Ah, that's a break. brilliant play. Thailand के player ने kick कर दी है Who's open play going to में get there बिल्कुल। first? Leave it, Man, leave it. or it- Yeah, Very, line. very wise. Unfortunately, That's Ball will unfortunate actually for go where it Thailand. was kicked from, right? Ben? exactly. Scrum for Scrum down, Pakistan. Pakistan. So And Yeah, I don't know, Mohsen. You played in the forwards. Did you ever kick the ball in a 15s game? yes, Oh, you did. I have a clip image to prove that as well. Okay. The problem is, if a forward kicks the ball and the ball goes out, they all look at him and say, why aren't "What have you moving?" done?" That's when you're extremely frustrated and you need to clear the ball and the number 9 and number Yes. 10 and number Like- 15 are not there, so
that's when I took that initiative, and I was clicked at that time, and I'll show you my image as well. Okay. Thailand has gotten all their points through kicks, right? Penalties, They haven't right. scored a try. Yes. Amazing. Which the kicker And he's is the man of the match today. definitely. So we need to actually, you know, So put the a aggregate, target or a guard on the kicker. yeah. So the aggregate is 4 points. So there's a single penalty kick will not help Pakistan. So It they need won't, to yeah. score the try. There's I still think time that's what though, they've Ben. been all Still have 8 started minutes, with. I would say. 8 more? Oh, we don't We have know. almost 8 minutes to go now. When that's what Pakistan has been, you know, on where they always went for the try. Long pass, Akib Javed, Nice good send off. pass, Haroon, That is Faisal, nice. let's go. Faisal, good Oh, lovely. inside This is pass. This is seventh. Continuity, Yeah, yes. this is brilliant play. Good territory gained by Set it up. Pakistan team. Get the ball out. They need to recycle the ball a bit faster than this. Again, forwards, counter dropped by Thailand. Daud Shah, good defense by Thailand. Afzal, Expect a counter ruck from Thailand soon. Afzal the But- ball. They're doing very Run. well at selecting their counter rucks. So now they're not rucking, they're not counter rucking, but then every third one they do, then they see they have a chance. I think I they're fishing. agree, Ben, yes. Pakistan's definitely fishing for a penalty here. Yes, that we have observed that, Ben. We actually saw Thailand moving away from the ruck in the start as well. That's right. So they don't want to We commit got in more a people. penalty. That's the one that the They forwards wanted, wanted. yes. They Okay, knew that's if they would just apply pressure, it would come. It's a penalty for a player not rolling away from a ruck. Okay, so 3 points are not going to help now. So it's the same old, same old. We love mauls. Let's hope it all goes as planned. I think the referee has been Called at the attention by the sideline? side referee assistant about something. Mohsen, you were right about the Thailand attitude towards the referee. We also saw one of the players there, you know, raising his shoulders. Questioning. Yeah. And that's sometimes very dangerous because, especially if it comes from the captain, then the players start to think that the referee is They step in against as well, them, yeah. and then They step in. yes. Just disturbs This, the whole. I don't know the name of the thrower, but this is Sarar. his most important Oh, throw of He's going to take his time. of this series. And I think Not the his life. forward back leader Ali Shahid was there to assist him or to give him a sign. सरार की बड़ी ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट थ्रो है बैन कह रहे हैं Oh, Good can, catch. beautifully Good. done. Perhaps also the most important catch of the game there. And this could be Ball. the most important maul of the Support game. करते हुए And this is the most. जाते doing जा it रहे हैं beautifully जाते जा रहे well. हैं लाइन They क्रॉस will- करके they will do नीचे it. ट्राई They will do it. रेफरी का टाइम आउट का इशारा He's going to take his discuss it time. with his assistant. रेफरी अपने जज से मुशावरत करेंगे कि क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थे ग्राउंडिंग बॉल ग्राउंडिंग के लिए पूछ रहे Let's. ट्राई गिवन Try. Well done. What a game at hand. And now, yes. साउथ गिल If I were those boys, I would not celebrate I yet. would. Remember, Still 3 have 5 days ago. minutes. That
was a bit premature then as well. So Okay, but still, correct. They it's need to a put their heads reward for down the and effort. finish it off. बिल्कुल बैन कह रहे हैं इनको बहुत जल्दी है खुशी मनाने की अभी इनको थोड़ा इंतज़ार करना है. They should wait for a few minutes. Still have 5 minutes on the board. Yes. Tears of joy, it could very well turn into Yeah, I think the kicker also just needs to make sure that gets he the knows two, and that he's within the time that the referee And he gives him. takes exactly, Ben. Thank you. I think he has 1 minute. He has 1 minute, but it's also important to make contact with the referee. Killing the time. Otherwise, he need to tell you your time's up. Okay. So I'm sure Thailand's going to chase this one for their lives, just to put him off. और उमैर खान जो है अब Umair 2 पॉइंट from a के लिए similar बोनस पॉइंट position के लिए missed कोशिश करेंगे. the last one. Let's see if he gets this in. From a similar angle, he's And misses he it. missed again. There were some crucial 2 points जो कि मिस हो गए हैं उमैर खान की तरफ से. He same again. His distance is good. This is now where patience and you composure just need to hold on is to the needed. ball, पाकिस्तान के पास take the clock over. So the aggregate कुछ score मिनट हैं is गेम 2 को. points. Cannot afford a penalty here against that kicker. So if Pakistan, they Correct. just need to be very patient. अफजाल ने किक किया अपन अंडर बॉल थाईलैंड के पास. And here's the danger man, the kicker. And he's going to, he wants to become the try scorer now. Let's see. Brilliant Protected play. by- He's Yeah, done Cape very well. Sadiq. He's done very well to hang on to the ball and gain some थाईलैंड ground के as पास ही well. बॉल है अभी भी. Crucial ground. Pakistan's not counter-rucking at all. Kick. अपन अंडर उमैर खान डॉज करते हुए Umair प्लेयर्स is को so good to किक watch. की है. सही किक नहीं कर Chasing सके. I Oh, think and that's That's a little bonus. post and That error. is a little bonus. That is Okay, a I think vital we're going bonus, to yeah. we're going to get a reserve on for Omar Khan. Umair think Umair is Khan is- injured, it seems. pulled doesn't the look hamstring, good. I think. I think it's just a cramp. The way that he bouncing could be a calf cramp or a hamstring. Yes. गेम अपने बिल्कुल आखिरी लम्हात में है. हमारे पास सिर्फ 1 मिनट से कुछ ज़्यादा सेकंड रह गए हैं गेम के ख़त्म होने में. पाकिस्तान जो है 24 पॉइंट से लीड कर रहा है जबकि थाईलैंड के पॉइंट्स 18 हैं. Do you know that famous water boy? Yes, that's Kashif Kashif Khawaja. Khawaja. Yes. He's He was one of the legends. Yes, Yeah. he's one of the legends. Ex-Pakistani captain as well. Exactly. He's also serving on Asia Rugby's athletes committee. Yes, he is. That's He was right. appointed, I think, few months back. That's right, and the committee is led by Michael Leach. Okay. So Cash is doing a very good job there. So we're in for another nail biter here. Oh, we It's- are. It's exactly 6 points, but Pakistan needs. I hope there's no more twist left in this game. Because they are 1 point up. That's correct, they're 1 point up. Yeah, they're One- exactly where they should be to win the aggregate, Yeah. to get that to that aggregate. So suddenly from nowhere, from Pakistan out on the scoreboard for the first 55 or 60 odd minutes, we suddenly have a totally different score line. Well, the second half score is 24-9 for Pakistan. Because this is what all the competition is all about: excitement, the scoring going up and down. I would say this the is pure entertainment. this is about right now. Pakistan. Whenever we are pure entertainment, guys. This is the actual entertainment, and we are very grateful for fast sports, sports. Well done. to covering this Asian rugby fixture. And Which is cracker being of live broadcasts on YouTube and on their channels. I think the boys are saying there's just a minute and a bit left. Let's just let's hang on to the ball. Let's Okay. not No let's knock-ons. No, Silly or no knock-ons. wild passes. just
Put in the scrum, get the ball out. Just keep the ball with them. That's right. And then kick it out when. I think we were discussing about the cameraman. He has adjusted with the game strategy as well. He's more into the game now, and we can actually see the footage. Scrum, Pakistan का scrum है. Thailand का अच्छा push, referee की call, unbalanced push था. Well, it's in Pakistan's favor because that's another 45 seconds off the clock. Correct. Works in Pakistan's favor for sure. Thailand knows the clock is ticking over. It's final seconds of the game. What a cracker of a game. What a nail biter yet again. बहुत ज़बरदस्त forward play देखे हमने पाकिस्तान की तरफ से. बॉल पाकिस्तान के पास है. अली शाहिद ने बॉल उठाई. एक साइड स्टेप करते हुए हारून बॉल अभी पाकिस्तान के पास है. रख बना लिया है. I don't think they need to run the line. They just need to just form rucks and that's about it. That's right. So they're going to do the pick and drive. Yeah, that's what they're doing. Because that has worked so well. It has, and the captain decided to prevail. The captain just came in and did exactly what was needed. Time हो चुका हुआ है. 80 minutes. पाकिस्तान की अच्छी strategy है. They've learned from their mistakes from the previous match. Definitely. And the patience, Mohsen. Yes. We didn't see this patience the last 5 minutes. Ahmed Wasim, Haroon. And I would just set up another ruck. They need. And I would have a pod of forwards just driving. If the referee has signaled that the time is up, maybe just kick it out. Referee whistle बजाई है. They're just playing advantage there. Ahmed Wasim के पास बॉल है. वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के. रेफरी ने पेनल्टी दी है और अहमद वसीम इसको क्लियर करेंगे. आई थिंक दिस इज द लास्ट प्ले. Expect celebrations very soon. And that's it. So there has to be a line out formed. So that means the clock is still ticking. That was a penalty, so they need to carry on with the complete it. Line out होगी. पाकिस्तान थ्रोइंग करेगा. सारे प्लेयर्स रेडी हैं जश्न मनाने के लिए. I can imagine pandemonium in a few minutes. इसरार की बॉल थ्रो इन. अच्छी बॉल. मॉल बनाएंगे पाकिस्तान की टीम. फॉरवर्ड्स बहुत ज़बरदस्त मॉल बनाए इन्होंने. इनकी मेन स्ट्रेटजी रही है मॉल्स की. अफजल ने बॉल निकाला. अभी भी no counter ruck. There comes a little bit of a counter ruck. थाईलैंड जोर लगाते हुए पिक एंड गो किया हमाद सफदर ने. रेफरी ने ऑब्स्ट्रक्शन की कॉल दी. थाईलैंड का बॉल होगा. So what would I give to find out what the referee said there? Because somebody asked him how much time. And he's saying it, but we can't hear it. Yes. So nobody knows. So somebody needs to tell them. Shaz, what will they do here? Will they run it? I think they will run. They will. They will run from anywhere. And obviously, now. this could very well be the last play. So they need the continuity and no unforced errors on Thailand front. And Pakistan just needs composure here, not do anything silly. And discipline. Number 8 pick and go. That's the man. Good run. It's been a thorn in the flesh for Pakistan. थाईलैंड के पास अभी भी बॉल है. नकाना ने बॉल निकाली. थाईलैंड अपनी आखिरी जोर लगाते हुए. Don't do anything silly. Good tackle there. पाया के फैसल. रेफरी की विसल पेनल्टी. क्विक टैप एंड गो करने की कोशिश लेकिन रेफरी ने कहा कि मार्क से लें. टैप एंड गो. Decided their strength is in the running. Good defense for Pakistan. आकिब सदीक.
लॉन्ग पास नंबर 10 के पास, अहमद वसीम का टैकल, पेनल्टी कॉल हो गई है। रेफरी मार्क देते हुए थाईलैंड के प्लेयर्स को। पाकिस्तान की कैप्टन से बात करेंगे। टैप एंड गो की स्ट्रेटेजी थाईलैंड ने अपनाई हुई है। I don't know, I think they Thailand want ने to क्यों लिया tap territory and gain करके they'll go for 3 points. The 3 points would have given them the series. somebody probably didn't get I through think to them. Yes, they missed it. I think they missed that. Advantage again. There is the 3 points on the platter for them. रेफरी hope- ने येलो कार्ड दे दिया है पाकिस्तानी प्लेयर को, जो कि रक्स में टैकल के बाद रोल ओवर नहीं हो रहे थे। I think that's what the Thailand strategy was: quick tap to and gain- gain to territory gain. and get a penalty. That's exactly And what that's they what they've, now achieved. somebody just Yeah, so Mohsen, you've kept stats on the kicker, and he's kicked 6 out of 7 Yes, so far. So and don't miss the one kick from the center. That That's was right. almost 50 meters. 50-meter So one. this would be a kind of a piece of cake for him. As I said, the man of the match for Thailand, whether he Yes. kicks it in or not, was the kicker anyways, in my Arini. books. His name is This Arini. probably is his most important game anyways, probably in his career of this series for sure. But I'm surprised about the time. Kicked and It looks good. he missed. No, he missed it. Ben is excited. Ben's got excited. He can't believe it. This has Can't been believe it. this has been And the final this has whistle been has the been blown. toughest Great 14 game by Congratulations, Pakistan, Pakistan. and well played by on a Thailand. Great victory. Great live coverage by Fast Sports. Excellent team effort from everybody. Shiz, congrats. That is job well done. That is a beautiful game. It was a nail biter. We had lost hope in Pakistan, and suddenly we see them come out victorious. Not only in this game, but overall, they won the series, and this aggregate takes them Oh yes. a few notches up. We can see the players' emotions right now. Excited, That is such a big moment for Pakistan great rugby, moment. and tears of Zabardast. joy. Oh yes. Players on the field, Zabardast. Pakistan Yes. Zindabad. and we see a lot of Oh yes. hard work paying off for one Well side. Commiserations for Thailand. They had a great game, and we thought they would run away with it, but Pakistan showed some character, came back strong this evening, and what a great win overall they've had this evening. Good. Yes, exactly. This बिल्कुल possible नहीं हो सकता था Thailand की टीम के बगैर. Well played and well participation of Thailand in this fixture. We see Pakistan officials and players and supporters all celebrating, and Thailand players. We see the Asian Rugby president on the screen as well. We could see the coach Gerd. Oh, everybody is in there. सारे ग्राउंड में आ चुके हुए हैं. पाकिस्तानी प्लेयर उसको उठा के. जी हाँ, what a moment for Pakistan, what a moment for rugby, and what a moment for हमाद सफ्तर जो कि कैप्टन थे. शकील, हम शकील देख रहे हैं, असिस्टेंट कोच थे. सेलिब्रेशंस. डिफेंस कोच है पाकिस्तान टीम के.
उनको उन्होंने कंधों पे उठा लिया है खुशी से। Pakistan win that series, 2 matches series against Thailand. The winning movement you are seeing. Fast sports पर लाइव आप ये मनाजर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने ये 2 मैचेस की सीरीज थाईलैंड के अगेंस्ट रग्बी की सीरीज जीत ली है और डेफिनेटली रैंकिंग में ऊपर आएंगे और डिवीजन में भी पाकिस्तान सेकंड से फर्स्ट डिवीजन में शामिल होगा। What a game of rugby that was. Fantastic performance by Pakistan. Winning moments from Punjab Stadium, National Sports Complex, Lahore. These are our heroes, our champions who are celebrating, and the crowd is celebrating as well. इमरान को उन्होंने कंधे पे उठा लिया है। ज़बरदस्त प्ले, ज़बरदस्त टीम एफर्ट।
Welcome back. What a game of rugby and बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पाकिस्तान की इस टीम को और जितना भी हम मुबारक दें जितना भी उतना ही कम है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बहुत ही लेट डाउन किया फर्स्ट हाफ में पाकिस्तान की टीम ने शायद हमारे जज्बात के साथ खेलने का हमारे प्लेयर्स को ये एक मज़ा आता है हमारी कोई भी स्पोर्ट्स हो और आज रग्बी के प्लेयर्स ने भी वही किया है बट व्हाट अ कम बैक इन सेकेंड हाफ fantastic performance by Pakistan team. We must congratulate to the Pakistani team and the coaches and the staff and whole nation. Great game. Pakistan win this 2 matches series against Thailand and win the tournament, win the series by 15 and 24 score. Thailand score 20 and in this match they score 18. So Pakistan win by 1 number. Sir, welcome back again. What a game of rugby and what they did like in the second of Pakistan. So how you see and how happy Firstly, how would I see it? If you had asked me last night to write a story, a thriller, you know, up to the last minute, I could not have done it as well as Pakistan's done it, firstly. Secondly, I would say to them, don't do this to us again, because we've been sweating here for 45 minutes. 9-0 at halftime. You came to me, you said, what can they do? And we said, we don't really know. Exactly. Now, to score 24 points in the second half. The second half score is 24-9. Yes. So, yeah, they did what they do best. And how happy you are for the winning? I am very happy because we were not happy at halftime because we were worried about the body language. We were worried about the small mistakes. And they just simplified it. And just said, we're just going to keep it very close, nothing silly, and just grind away. What do you think, what the strategy of the second half, like Pakistan just come into the second half and they brilliantly, very well they played. So what's the thing which was missing in the first half? Small mistakes, yes. I think that's the first one. And then secondly, I think the coach had trained them, prepared them for 2 games. And that this last quarter was the one where they just played their strengths continuously. Thailand was very brave. They did very well, but you just cannot defend like that over and over and over. And what they did in the last minute in the second half, Thailand, what was that? What was that? that was nail-biting. That could have been, we looked at each other and said, is it going to be another tragedy? Yes, you know, because the kicker was very good. He kicked 6 out of his 7 previous ones. There was a 50-meter kick that he got. So Umar did the kick from Pakistan's side and brilliant play from Umar. So how you see, first of all, the captaincy in the second half and of course the players like Umar and Ali Khan, 2-3 players were brilliant in this second half. Well, in rugby we talk about the scrum or the forwards. That's the engine room. And if you have a good captain there, a good engineer, and I would say Hamad, the captain, is a very good leader there. He brought composure. I could see him how he kept on encouraging, and when things started working out, we could see the body language change. So in the backs we have the brilliant players with the good hands, but I would give a lot of credit to the captain. Yes, पाकिस्तान ने आज ये मैच और ये सीरीज अपने नाम कर ली है and what a brilliant performance by Pakistan. Thailand was on 12 in first half लेकिन दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने कम बैक किया और 24 स्कोर करके ये सीरीज़ अपने नाम की है और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं ये 2 मैचेस में टोटल पॉइंट्स जो हैं वो देखे जाते हैं कि कौन सी टीम के ज़्यादा हैं और वही इस टूर्नामेंट को जीत सकती थी और ब्रिलियंट प्ले बहुत ही ज़बरदस्त शानदार खेल का मुजाहरा. Ben, how you see these tournaments and this Asia Rugby Division 2 final and what will the result of these kind of tournaments in Asia and especially in Pakistan? I think firstly the ones who did not come for this tournament would say, I wish we could have been there. It was very well professionally run, so that's a good one. So that means that Pakistan should host, or Punjab Stadium should host more games. That's from Asia Rugby side, I believe that. And I think the rest is just inspirational because now they can work towards a Division 1 and have a good performance in Division 1. Okay. So yeah, big things are coming.
Okay, sir. Thank you very much, Ben, for being with us in this whole series, and we hope you enjoyed your stay in Pakistan, in Lahore especially. And we are very hopeful that we will see you again in Pakistan. Thank you. Best of luck for your future plans in Asia and especially in Pakistan. So I think I wish I could have been there to hear the Pakistan Zindabad. I could see it, but yes, we'll watch this last video, last second half again and again. Thank you very much to Fast Sports. थैंक यू वेरी मच बैन। जी हाँ, बैन हमारे साथ थे जो कि एशियन डेवलपमेंट मैनेजर हैं और इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद रहे हैं प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस में। और ज़बरदस्त काम पाकिस्तान की टीम ने आज किया है और वही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि पहले हाफ में बिल्कुल ही लेट डाउन किया और दूसरे हाफ में हमें वो तारीख़ी लम्हात दिए हैं जो कि शायद हम काफ़ी सालों तक नहीं भुला पाएंगे। और बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान रग्बी टीम। और अभी हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने सेकंड एक्सपर्ट के साथ दोबारा से आपको होम ऑफ वॉरियर्स, जी हाँ, इसमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ सईद हूँ, पाकिस्तान रग्बी यूनियन का प्रेसिडेंट। और आज हमारे लिए बड़ा खुशाइन था कि थाईलैंड की टीम आई और 3 साल के बाद एशिया का पहला मैच होस्ट करने की सादत लाहौर को हुई और पाकिस्तान रग्बी यूनियन ने इसको होस्ट किया। फास्ट स्पोर्ट्स की जो ये काविश है, फुल टाइम स्पोर्ट्स चैनल पाकिस्तान में, तो रग्बी जैसी गेमों के लिए और गेमें जो हैं क्रिकेट के अलावा, उनको फ़रोग़ देने में बहुत मदद दे रही है। और हम बहुत ममनून हैं फास्ट स्पोर्ट के कि उन्होंने ये मैच लाइव कैरी किया। इंशाल्लाह अगला मैच भी होगा और इसी तरह व्यूअरशिप बढ़ेगी, इसी तरह लोग खेलों की तरफ लोगों की तरगीब होगी। वेलकम बैक। यस, यू आर वॉचिंग होम ऑफ वॉरियर्स रग्बी पोस्ट मैच एनालिसिस में दोबारा से हम हाजिर हैं और बट अ गेम ऑफ रग्बी। शहजाद ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान फाइनली विन द सीरीज़ और कैसे देखते हैं आप आज के इस नेल बाइटिंग और थ्रिलर को? मतलब वी वर होपलेस इन द फर्स्ट हाफ, क्या होगा यार? आई थिंक ये कौम के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और रग्बी से आए, जहाँ से भी आए, व्हाट अ beautiful present that the masses and the nation has gotten in the form of a win through rugby. एक unbelievable match। हम लोग पहले हाफ में जिस तरह आपको अली पता है कि हम लोग बैठ कर हमने राइट ऑफ कर दिया हुआ था। हमने सोचा कि अब तो पाकिस्तान के लिए हम लोग स्कोर बोर्ड पे आ नहीं पा रहे थे और हमने कहा कि 9-0 स्कोर हो गया है। अब पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी 5 का हैंडीकैप पहले भी था और हम लोगों को 6 के मार्जिन से जीतना ज़रूरी था। बिल्कुल। सो हम लोगों ने, और ये आई थिंक मैं आपको बताऊं वाली, ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा देखा है रग्बी के अंदर भी कि हम नीचे से इस तरीके से ऊपर आए हों टू विन व्हाट इज़ अ ब्यूटिफुल विन इन माय ओपिनियन। सो व्हाट अ गेम ऑफ रग्बी। अगेन हम लोग पाकिस्तानी अपने ऑडियंस को और अपने फैंस को मायूस नहीं करते। हम इसको नेल बाइटर पे लेकर ही दम लेते हैं। बिल्कुल, ये रवायत रही है और आदत रही है कि हम जो है वो एक दफ़ा तो पूरी कौम को जो है वो उसको कहते हैं कि पाँव पे खड़ा कर देते हैं एंड वी वर लाइक कि पता नहीं अब क्या होगा।
और एक्चुअली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पहले हाफ में बिल्कुल 0 स्कोर से सेकंड हाफ में एक तो इतना बड़ा स्कोर करना और इतनी लीड से जो है वो जीत जाना, दैट वाज अनबिलीवेबल और व्हाट अ परफॉर्मेंस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेरेमनी भी तकरीबन आगाज़ हो चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ एशिया रग्बी मिस्टर कैस आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। सर, थाईलैंड की परफॉर्मेंस पहले हाफ में बेहतर थी और बड़ा डोमिनेंट भी नज़र आए। पाकिस्तान दूसरे हाफ में वो क्या ऐसे अल्फाज होंगे वो कोच के, या वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी कि आते ही पाकिस्तान ने अगेन वो डोमिनेंस दिखाई, और सिर्फ डोमिनेंस नहीं दिखाई, एक तो स्कोर किए और फिर स्कोर उनके भी रोके रखे, लाइक उनको करने ही नहीं दिए ज़्यादा स्कोर। आई थिंक अली ये रोल रिवर्सल हुआ है। जो गलतियां पाकिस्तान पहले हाफ में कर रहा था, एग्जैक्टली वही गलतियां थाईलैंड ने शुरू कर दिया। अनफोर्स्ड एरर्स करने शुरू कर दिए, बॉल अनड्यू अननेसेसरीली अपने अपोनेंट्स को देना शुरू कर दिया। सो आई थिंक पाकिस्तान पहले हाफ में एग्जैक्टली यही कर रहा था कि वो हम अपने अपोनेंट की टेरिटरी में जाते थे और हम उनको सिल्वर प्लेटर में बॉल देकर वापस आ जाते थे और कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आई, किक करते पेनल्टीज के ऊपर हम अपने गोल के अंदर करते, वो ना कर पाए। हमने उसके बाद जो है थाईलैंड ने एग्जैक्टली, और मैं आपको बताऊं अली कि थाईलैंड का एक और उनका किकर जो था वो आज मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि जितने पॉइंट थाईलैंड ने आज ऊपर डाले हैं वो उनके किकर ने डाले हैं। उन्होंने एक भी ट्राई स्कोर नहीं, वो नहीं मिस किया। और बॉल जो ट्राई लाइन पर करके जो ट्राई स्कोर करते हैं 5 पॉइंट, वो थाईलैंड एक दफा भी नहीं क्रॉस कर सका पाकिस्तान की। सो पहले हाफ में थाईलैंड ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, पाकिस्तान को ट्राई स्कोर करने दी, लेकिन पाकिस्तान ने भी थाईलैंड को ट्राई लाइन से ऊपर नहीं जाने दिया। उनके किकर ने उनको एक विनिंग चांस देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान केम थ्रू ब्यूटिफुली वेल। और सेकेंड हाफ में हम लोगों ने जो हमारी आपने पूछा वो स्ट्रेंथ्स हमने इस्तेमाल की, और हमने हमारी वीकनेस है कि हम अपनी बॉल को लाइन में चलाते हैं और हम लोग यार्डेज लूज कर रहे थे। लाइन में चलाने का मतलब है कि आपने बॉल को पीछे दिया और उन्होंने ले जाने की कोशिश की आपके बैक्स ने आगे। हमारी स्ट्रेंथ हमारे फॉरवर्ड्स थे दोनों गेम्स के अंदर। हमने अपने लाइन आउट्स, हमने अपने स्क्रम्स उसके थ्रू जीते, और यही हम लोगों ने दिस इज समथिंग दैट हैज गॉटन थ्रू अस ओवर द लाइन। और हमने सारे पॉइंट्स अपने जो हैं वो प्रेडोमिनेटली अपने ट्राई स्कोर जो है उसके थ्रू किए। यहाँ पर आप देख रहे हैं थाईलैंड के प्लेयर्स स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको लिए चलेंगे हम पंजाब स्टेडियम, जहाँ से आप ये कुछ ही देर में हम आपको लिए चलेंगे, जहाँ पर आज की ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और थाईलैंड का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर मैचेस खेले हैं, और वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट टाइम भी वो विज़िट करेंगे। और उन्होंने एंजॉय भी किया होगा इन मैचेस को। और ये नेल बाइटर्स ये किसी भी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं थे। जो भी आप देखते हैं यूके या आगे पीछे के जो भी मैचेस देखते हैं, मतलब वेरी क्लोज और थ्रिलिंग, और पूरे ऑडियंस वहाँ थी, कितना क्राउड था वहाँ पे। और सिर्फ क्राउड था ही नहीं बल्कि फुल ऑफ एनर्जी था, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ। और जो विनिंग मोमेंट्स हमने देखे उसमें कैसे क्राउड ने आके पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत पुरजोश, और जिस तरह हमारी कौम सेलिब्रेट करती है वो साफ नज़र आ रहा था कि एक इलेटेड मोमेंट है पूरी कौम के लिए, उस ऑडियंस के लिए। और आज हम लोगों ने जो कप समझ लें जो हम लोगों ने उठाया है, वो एक बहुत रग्बी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मैं देखने वालों को आपके तवज्जुह से ये पूछना चाहूँगा, और आप बताएं कि कितनी बड़ी विन है ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में। और रग्बी में तो है, पाकिस्तान ने आज ये जीती है सीरीज़, तो एक कितनी बड़ी विन ओवरऑल इम्पैक्ट ये डालेगी हमारी स्पोर्ट्स में और हमारी रग्बी पे? जी अली, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो स्पोर्ट्स है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड कर्व देख रही है, और हम लोगों ने कोई ऑफ लेट बहुत ज़्यादा सरहदें नहीं पार की हैं कि हम स्पोर्ट्स हम आगे लेकर जाएं। सो रग्बी की ये विन ओवरऑल हमारे लोकल रग्बी के लिए तो है ही है ज़रूरी, बट ओवरऑल बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि अगर एक रग्बी जैसी स्पोर्ट में जो आप लोग जो हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारी बहुत अच्छी स्पोर्ट्स जो इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी स्पोर्ट्स बोर्ड जो हैं वो अब ज़्यादा तवज्जो दें, शायद इसके ऊपर सुनवाई ज़्यादा हो। बिल्कुल, और यही हमारा मोटिव और हमारा मिशन भी यही है फास्ट स्पोर्ट्स का। जिस तरह आज ये सीरीज़ शायद ये पहली दफ़ा है कि इस तरह की सीरीज़ जो है वो आपने लाइव अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखी हैं, और वी आर डूइंग इट। और हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारी ये स्पोर्ट्स की प्रेजेंस क्रिएट हो और इनका लेवल और इनका म्यार बेहतर। और आज आपने अपने हीरोज़ को देखा है स्क्रीन पे, चाहे वो उमैर खान हो,
हमाद सफ्तर हों और अहमद वसीम अकरम, बहुत से बच्चे आज जो देख रहे होंगे उनको शायद मालूम होगा कि ये भी हमारे हीरोज़ हैं, ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। अनबिलीवेबल है मेरे लिए। अगर मैंने मैन ऑफ द मैच प्रपोज करना हो इस गेम के लिए तो मुझे आज उमैर और साद जो रफ़ीक हैं वो मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगे हैं, और उनके फ़ौरन बाद अली खान के बहुत अच्छे रन थे, और कैप्टन जिस तरह बेन ने भी पॉइंट आउट किया अली कि कैप्टन की एक फोर्स, एक अपनी एक इम्पैक्ट होता है कि वो पूरी टीम को पुरजोश रखें और उनके अंदर इतना विल पैदा करें या रिजॉल्व लेकर आएँ कि वो ये विक्ट्री देखें। और ये एज वी सेड अर्लियर, लक फॉर्चून्स द ब्रेव, कुछ हमारे थोड़ा लक ने भी हमारा साथ दिया। एग्जैक्टली और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि प्लेयर्स स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए आपस में गले मिल रहे थे, और बहुत ही खूबसूरत ये मनाजर हैं, और ये मनाजर आप पंजाब स्टेडियम से देख रहे हैं लाइव फास्ट स्पोर्ट्स पर। ये पाकिस्तान की टीम आपके सामने आप देख रहे हैं। थाईलैंड के प्लेयर्स अपने फ्लैग के साथ आए और सब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ गले मिले हैं, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान थोड़ा सा थाईलैंड मायूस होगा अपनी इस परफॉर्मेंस से, और लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये मैच रग्बी का जो है वो खेला गया है, और आखिरी मोमेंट तक जो एक नेल बाइटर अगर आप इसे कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ एशिया मिस्टर कैस जो कि विनिंग ट्रॉफी दे रहे हैं हमाद सफ्दर को, पाकिस्तानी कैप्टन ऑफ रग्बी। What a proud moment for this young captain and for the whole nation and for rugby in Pakistan. And what two lovely games of rugby we've seen over the course of a few days. और आप सारे प्लेयर्स का जोश और जज्बा देखें। इस वक्त ये ड्रीम कम ट्रू है इन यंग प्लेयर्स की, जो एक अप बडिंग कमिंग स्पोर्ट है रग्बी, जो कि एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट भी नहीं है हमारे इस मुल्क के अंदर। एंड दे आर सो इलेटेड, दे आर सो हैप्पी टू have lifted this cup this evening. What a proud and a lovely moment for them all. Coach is also there. इस कोच के आने से भी बहुत ये हमें एशियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने आई बिलीव गर्ट की खिदमात दी हैं, और उसके आने से हम देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है हमारे ओवरऑल हमारी रग्बी के ऊपर और हमारे बॉयज़ की ग्रूमिंग के अंदर। दे परफॉर्म ब्यूटिफुली वेल ओवरऑल, जो उनकी स्ट्रेंथ्स थी उसके मुताबिक खेला। थे कुछ अनफोर्स्ड एरर्स और सारे, लेकिन वो आज की जीत के बाद जिस तरह होता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है पुरानी बातें। सो आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक अली इन फ्यूचर, और ये जीत जो है ये रग्बी को शायद अब और ज़्यादा ऊंचे मकाम पर लेकर जाएगी। बिल्कुल पाकिस्तान में ये इस किस्म का सीरीज़ का विन करना ये बहुत ही खुशाइंद है, और आगे आने वाले जो बहुत से रास्ते खुलेंगे इसके लिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी भी ये जो परफॉर्मेंस आई है नज़र, और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स में बहुत से रास्ते खुलेंगे रग्बी के लिए। All the players were brilliant today. I hope and I feel that जो भी हमारे और इदारे जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स की कमिटीज़ हैं, वो भी इस मोमेंट को देख रही हों और इसको सरपरस्ती में लेके जाएं। बट व्हाट अ गेम ऑफ वाओ दैट वाज ब्यूटीफुल, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, और वो जो कप का उठाना है हमाद सफ्तर जो कैप्टन है, और वहाँ पर एशियन प्रेसिडेंट जो कि यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में भी प्री मैच में मौजूद थे, और वहाँ पर सर क्या ही प्राउड मोमेंट है ये पाकिस्तान टीम के लिए। और ये जो रग्बी के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या उनकी फीलिंग्स और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस विन का उनके ऊपर नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट्स और मैचेस और इन चीज़ों के लिए। आई थिंक कि उनके लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है। कोई इंसान जब भी किसी स्पोर्ट में इतना ज़्यादा टाइम दे, अपनी एनर्जी डाले, तो उसके लिए इस तरह का मोमेंट देखना उसकी ज़िंदगी के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड द रियल हाई इन देयर लाइफ। दे आर ऑन अ रियल हाई, और इसका इम्पैक्ट जो हमारे अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं और जितनी हमारी ज़िलों के अंदर टीम्स हैं, जितने प्रोविंसेस के अंदर टीम है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब वो देखेंगे कि हम लोगों की मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है, दे वुड पुट इन मोर एफर्ट, और स्कूलों में और प्रमोट होगी। रग्बी
आपके चैनल फास्ट स्पोर्ट्स के थ्रू ये लाइव कवरेज जा रही है लोगों को, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग टू नो व्हाट रग्बी इज. इट इज अ स्पोर्ट नॉट वेल नोन इन पाकिस्तान. सो आप लोगों के थ्रू ये पूरे के पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनली टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रही है और लाइव चल रही है, और इसके हम बाद में भी प्रीव्यूज देख सकते हैं. सो इन इटसेल्फ it is a big thing to see channels like yours coming out and supporting sports in such a big way. जी हाँ बिल्कुल. और आज दोबारा से बताते चले कि पाकिस्तान ने ये 2 मैचेस की सीरीज़ जीतकर पूरी सीरीज़ अपने नाम कर ली है. सर, डिवीज़न 2 से पाकिस्तान अब डिवीज़न 1 में सफ़र करेगा, थोड़ा इसका बारे में बताइए हमें. आई थिंक डिवीज़न 1 जो है अली, वो बहुत टॉप टीम्स हैं. वो ऐसी हैं थोड़ा सा जो दूर है हमारे लिए वो फासला कवर करना जो है वो है. लेकिन ये इसका ये मतलब होगा कि जो हमारे साथ की टीमें थी उस रेलीगेशन में अब उनसे हम ऊपर आ गए. फॉर एग्जांपल, अगर थाईलैंड हमारे से कोई 3 या 4 नॉचेस ऊपर था तो हमारी रैंकिंग अब उसके मुकाबले में और बेहतर हो जाएगी. सो इस तरीके से डिवीजन अपग्रेड होती रहती है. सर, ये थाईलैंड जो आई है और यहाँ पे खेली है, ये ऑफ कोर्स शेयर करेंगे जब बाहर वापस जाएंगे, जब बाकी टीमों के साथ जब टीम्स मैचेस खेलती है, तो जो एनवायरनमेंट यहाँ पर उनको दिया गया, सिक्योर एनवायरनमेंट, और इसके अलावा ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ थी और बाकी चीज़ें, तो व्हाट डू यू थिंक जो बाकी टीम्स हैं वो भी पाकिस्तान आने के लिए इतनी ही शिद्दत दिखाएंगी आने वाले वक्त में? देखें, जो हॉस्पिटैलिटी और जो जोश और जज्बा और जो हम वार्म वेलकम अपने गेस्ट को देते हैं पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में मशहूर है. और ये पॉजिटिव नोशन जो है, ये जो भी यहाँ पर आता है, चाहे वो बेन हो चाहे वो कोई और हो, वो सब लोग यहाँ से पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके जाते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली द इमेज दैट वी नीड टू सेंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट थिंग्स आर सेफ हियर. हम लोग यहाँ पर आएँ और हम लोग दोबारा से अपना जो है वो काम भी शुरू करें और खेल के मैदान को भी दोबारा से सजाएं. तो इट्स अबाउट टाइम कि इंटरनेशनल सीन के ऊपर पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अपना नाम लेकर आए. जी बिल्कुल. एंड वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट टाइम भी जो है वो दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान को विजिट करेंगी और यहाँ पर मैचेस हमें और भी रग्बी के मैचेस देखने को मिलेंगे. और जितने ज़्यादा मैचेस देखने को मिलेंगे उतने ज़्यादा हम अपने यूथ को भी मोटिवेट कर सकते हैं और हमारी यूथ भी स्पोर्ट्स की तरफ आएगी, और स्पेशली रग्बी जैसी गेम की तरफ, जो कि देखने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन बहुत मज़े की गेम है, और वो आज आपने देखा पाकिस्तान ने. सर, ये एक तो मैच जीतना होता है और एक होता है कि आप पहले हाफ में 0 हैं और उस दूसरे हाफ में पाकिस्तान वर लुकिंग के आए ही जीतने के लिए. दूसरे हाफ में दे वर टोटली अ डिफरेंट टीम. तो आपको क्या लगता है, इसमें कोच का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कैप्टन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या कौन सी वैसी बात है, या देवर खुद से ही वो जानबूझ के पहले हाफ में थोड़ा लो खेल रहे थे? मतलब इवन थाईलैंड वाजंट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान सेकंड हाफ में आगे ये कर जाएगा. अली, मेरा ख्याल है ये हमारे ब्लड में है. ये डायनामिज्म, ये वॉलेटिलिटी, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये अब कोई भी स्पोर्ट उठा लें किसी तरह, हम लोग समा और याद है पाकिस्तानी टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है. किसी दिन हम आएंगे तो वी वुड आउट परफॉर्म एनी ब्रिलियंट साइड इन द वर्ल्ड. और किसी दिन आएंगे वो दिन हमारा नहीं होगा तो हम बिल्कुल किसी एमएसी टीम के आगे भी ढेर हो जाएंगे. सो आई थिंक ये आज का दिन जो हमने कैरेक्टर दिखाया है वो मैंने आपको एक्नॉलेज किया है कि मैंने रग्बी के अंदर अपनी जो प्लेइंग ईयर्स हैं, मेरे बहुत डेकेड्स हैं, मैंने हम लोगों को मैंने नहीं देखा कि हम लोग इतना नीचे से किसी तरीके से कोई इंटरनेशनल फिक्सचर्स भी या क्लब मैचेस में भी जो हमने बाहर खेले हों, कि हमने इतना कैरेक्टर दिखाया हो कि हम नीचे से आए. इवन बाकी स्पोर्ट्स में भी जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन आज इतना अंडर प्रेशर होने के बावजूद दूसरे हाफ में जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, दैट वाज अनबिलीवेबल. जी हाँ, पाकिस्तान एशिया रग्बी डिवीजन 2 फाइनल्स का ये 2 मैच की सीरीज़ जो कि थाईलैंड के साथ थी, पाकिस्तान जीत चुका है. और यहाँ पर हम मुबारकबाद देंगे एक दफ़ा से फिर, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक देंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो मुबारक देंगे, और जो हमारे कैप्टन और कोच हैं उनको भी मुबारक देंगे. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे. कहीं मत जाइए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस. गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो,
इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। इससे अच्छी रग्बी पाकिस्तान में हमने नहीं देखी और फास्ट स्पोर्ट्स के हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि जी लाइव गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 35 ममालिक में गया है। मुझे स्विट्ज़रलैंड समेत बहुत सारे ममालिक से फ़ोन आया है कि जिन्होंने आपकी कवरेज देखी है और बहुत इन्जॉय की है और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि कोई और ऐसा चैनल भी आया है जो कि हमारे जैसी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहा है। There is a light in you. Believe in yourself. Live your dreams. Focus on your game. Exclusively on Fast Sports. Welcome back to the Fast Sports. You are watching Home of Warriors Rugby post match analysis और मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो विनिंग है उससे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर और प्लेयर्स के बिलीव के ऊपर, सेल्फ बिलीव के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि शायद एक ये ऐसी विन है जो चाहिए थी प्लेयर्स को, हमारी रग्बी जैसी स्पोर्ट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा बूस्टअप आपको लगता है करेगी और आने वाले जो फ्यूचर में जो हमारे टूर्नामेंट्स या इवेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कितना हेल्पफुल साबित होगी ये विन हमारे लिए? आई थिंक ये इन मोर वेज देन वन, ये हमें जो विन है ये हमारे काम जो आएगी रग्बी प्लेयर्स के लिए भी और ओवरऑल सिस्टम के लिए भी। एक तो ये इंटरनेशनल दरवाजे खोल देगी फॉर मोर टीम्स टू कम और आगे आइंदा रग्बी फिक्सचर्स के लिए भी और बाकी और स्पोर्ट्स के लिए भी कि थिंग्स आर सेफ एंड अगर इतने बड़े स्क्वाड लोग लेकर आ सकते हैं तो और स्पोर्ट्स के लिए भी सेफ है कि वो कर सकें। हमारे रग्बी के इम्पैक्ट के लिए तो ये क्योंकि एक बडिंग स्पोर्ट है, अभी इन्फेंट स्टेज में अपनी तो ये इस तरह की विन्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रोल है उनका। ये फ्यूचर प्लेयर्स के लिए और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को कहीं से कहीं ले जाएगा। अब आगे के कोई फिक्सचर आएगा, दे वुड लाइक टू परफॉर्म इवन इन अ मच बेटर फैशन। वो अपने और ज़्यादा अपने उससे ज़्यादा देंगे। बिल्कुल, इसमें जो थोड़ी हमने मिस्टेक्स जो थोड़ी मिस्टेक्स हैं उनको कवर करने के ओवरऑल इन आल्सो प्लेइंग और आल्सो जो भी सारा इवेंट और सारी चीज़ें, तो वी आर इम्प्रूविंग बाय द मिनट आप कह लें। और इस तरह की विन्स जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को भी एकदम ऊपर ले जाती हैं और कई दफ़ा ये एग्जैक्टली आपको ये चीज़ होती है जो आपको किसी एक छोटी स्टेज से लेकर एकदम ऊंची स्टेज पर ले जाती है। बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारा जो रग्बी का स्ट्रक्चर है वो बहुत उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जीत पाकिस्तान के लिए और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम की तरफ से। वंस अगेन वी कांग्रेचुलेट पाकिस्तानी टीम एंड ऑल्सो पाकिस्तानी कौम में हम भी हैं, हमें भी मुबारकबाद हो। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और आज ये एशिया रग्बी डिवीज़न 2 का फाइनल के दोनों मैचेस जीत कर ये सीरीज़ अपने नाम की है। वी थैंक्स आवर गेस्ट मिस्टर कैश, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ एशिया रग्बी से यहाँ पर आए थे प्री मैच में, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर बैन हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया, आप पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहे हैं। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर अली, इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, और वी होप यू एंजॉयड दिस ट्रांसमिशन। पूरे सारे मैचेस आपने लाइव फास्ट स्पोर्ट्स पर देखे हैं विद प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस और विद द कमेंट्री एंड वी आर वेरी मोटिवेटेड एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम अपने स्पोर्ट्स के मेयार को फास्ट स्पोर्ट्स मज़ीद बेहतर बना सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेकर आ सके और अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को और उनके प्रेजेंस को क्रिएट कर सके। और जब वो ये मैचेस खुद देखेंगे तो वो खुद उसमें ग्रूम कर सकें और इसके साथ साथ हमारी जो यूथ है इससे मोटिवेट हो सके, यही हमारा मिशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस।
गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ सईद हूँ, पाकिस्तान रग्बी यूनियन का प्रेसिडेंट। और आज हमारे लिए बड़ा खुशाइन था कि थाईलैंड की टीम आई और 3 साल के बाद एशिया का पहला मैच होस्ट करने की सादत लाहौर को हुई और पाकिस्तान रग्बी यूनियन ने इसको होस्ट किया। फास्ट स्पोर्ट्स की जो ये काविश है, फुल टाइम स्पोर्ट्स चैनल पाकिस्तान में, तो रग्बी जैसी गेमों के लिए और गेमें जो हैं क्रिकेट के अलावा, उनको फ़रोग़ देने में बहुत मदद दे रही है। और हम बहुत ममनून हैं फास्ट स्पोर्ट के कि उन्होंने ये मैच लाइव कैरी किया। इंशाअल्लाह अगला मैच भी होगा और इसी तरह व्यूअरशिप बढ़ेगी, इसी तरह लोग खेलों की तरफ लोगों की तरगीब होगी। Exclusively on Fast Sports. गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। Rain in Moscow, coming soon. गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। इससे अच्छी रग्बी पाकिस्तान में हमने नहीं देखी और फास्ट स्पोर्ट्स के हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि जी लाइव गया है,
ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 35 ममालिक में गया है। मुझे स्विट्ज़रलैंड समेत बहुत सारे ममालिक से फ़ोन आया है कि जिन्होंने आपकी कवरेज देखी है और बहुत इन्जॉय की है, और हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि कोई और ऐसा चैनल भी आया है जो कि हमारे जैसी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रहा है। This program is brought to you by DH लाहौर इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आज पहला फाइनल खेला जा रहा है जाकिर हुसैन और अहमद आफरीदी के दरमियान। दोनों प्लेयर्स आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। रेड में जाकिर हुसैन बहुत ही मंझे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ये हमारे चैंपियन। दूसरी तरफ हमारे हीरो अहमद आफरीदी ब्लू में, आर्मी ग्रीन से इनका ताल्लुक है। बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने अपने पिछले मैच में, और आज इस मैच में लेट्स सी थोड़ा सा प्रेशर भी होगा सर दोनों प्लेयर्स के ऊपर। और ये भी है कि आफरीदी जहां भी गए हैं जी, जहां भी गए दास्तान छोड़ आए। बिल्कुल। आज के हमारे इस मैच के रेफरी मोहम्मद शुएब खान, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, अपने दौर के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और कौमी रेफरी हैं, नेशनल रेफरी हैं मोहम्मद शुएब खान। जी, रेड में जाकिर हुसैन आर्मी वाइट से इनका ताल्लुक है और बहुत अच्छे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। और अहमद आफरीदी जिनका ताल्लुक आर्मी ग्रीन से है, यानी दोनों आर्मी से है। इसकी अहमद आफरीदी का खेल भी हमने देखा है और मैं ये समझता हूँ कि ये अपने हरीफ को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। गो के जाकिर हुसैन एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन और यहाँ पर पहले राउंड का आगाज़, बहुत बड़ा दिन आज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान में। आज का फाइनल खेला जा रहा है, पहला फाइनल। ओहो, जाकिर हुसैन और अहमद आफरीदी भरपूर अटैक करने की कोशिश। ये देखिए खूबसूरत जाकिर का पंच। जाकिर ने बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया है आफरीदी के पंच को। जी हाँ, वाह। यहाँ गट आफरीदी का बेहतरीन स्ट्रेट पंच। ये देखिए एक और गुड ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स क्लोजली एक दूसरे को। अभी तक आफरीदी जाकिर को मौका नहीं दे रहा। ये जाकिर का एक पहला पंच मैंने देखा है जो जिसने रसाई की है अहमद आफरीदी। ये 1-2 का कॉम्बिनेशन है जाकिर हुसैन का। ये कोचेस साथ में पीछे से अपने प्लेयर्स को पकअप कर रहे हैं। अभी कोचेस खिलाड़ियों से ज़्यादा खेलता है बैर बैठ के। बिल्कुल, अपनी एक फाइट कोचेस की भी चल रही होती बाहर। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप ये सारे मैचेस लाइव आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर। आज से पहले कभी भी ग्रास रूट लेवल पे जितने भी मैचेस हुए हैं, जितनी भी चैंपियनशिप्स हुई हैं, वो भी इस क्वालिटी के साथ
और इस स्टैंडर्ड्स के साथ आपने नहीं देखी, और ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं। ये पूरी चैम्पियनशिप आप तक हमने पेश की है और आज के फाइनल मैचेस भी आप तक पेश कर रहे हैं। शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पंचेस का वार। आज फाइनल है, शायकीन अपने अपने प्लेयर्स को पूरी सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेट पंच लगा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। अरे मैंने कहा था ना कि करार हुसैन वो अच्छा खिलाड़ी है, अपना जाकिर हुसैन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अहमद हफीज उस मुश्किल में डाल सकता है और डाल रहा है। बिल्कुल, अभी तक डोमिनेट नजर आ रहा है, बहुत अच्छे पंच निकाल रहा है। अहमद शायद पहले राउंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाकिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अहमद का गेम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जाकिर की यही कोशिश है कि मैं कोई फजूल पंच ना निकालूं, अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करूं। और यहाँ पहले राउंड का खेल इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। ये देखिए शायकीन की बड़ी तादाद और पूरी स्पोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है THFA 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये मैच रेफरी दोबारा से उन्होंने भेजा है और खिलाड़ियों को कॉमन कॉर्नर्स पे भेजा है ताकि वो उनके कॉर्नर्स पे जो पानी है उसको साफ किया जा सके। मैच के रेफरी मोहम्मद शुएब खान। दूसरे राउंड का आगाज जी, कर्नल नासिर जाज तोंग सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन, उनके साथ मेजर इरफान, ये पंजाब पाकिस्तान आर्मी की टीम के इंचार्ज हैं मेजर इरफान साहब, जो जिन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है आर्मी का। बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है अपने प्लेयर्स की गेम को देखने के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला जाकिर हुसैन और अहमद आफरीदी के दरमियान अभी तक ये दूसरे राउंड का खेल शुरू है। हर मैच में 3 राउंड का खेल खेला जाता है। अली नासिर अंडर 14 में खेला करता था जब मैं रेफरी होता था, और ये अंडर 14 में खेलता था। ये खुद भी खिलाड़ी है बॉक्सिंग का, और साथ मेजर इरफान बैठे, वो खुद भी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, जो बॉक्सिंग टीम के इंचार्ज है। ये देखिए बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। जाकिर हुसैन सिर्फ कोशिश कर रहा है कि मैं मौका पाऊं और मौका देख के सिर्फ हदफ को निशाना बनाऊं, मैं फजूल पंच ना निकालूं, अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करूं। जी गुड, बेहतरीन कट लगाए हैं जाकिर हुसैन ने। ओह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पंच, बहुत खूबसूरत पंच, एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला। और ये देखिए शायकीन की बड़ी तादाद, और ये बाबा जी आप देख रहे हैं जो कि सारे मैचेस में यहाँ पर मौजूद रहे हैं और सारे दिन यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अपने दौर के बॉक्सर थे और वही जज्बा, वही शौक ये आज भी मौजूद है। ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को, कोई मौका नहीं देना चाहते और पॉइंट लूज नहीं करना चाहते। देखिए हुक करने की कोशिश की थी जाकिर ने, रेफरी ने वार्न किया है, समझाया है अहमद को। ओ बेहतरीन, DHA लाहौर इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, आज फाइनल मैचेस। आज का ये फाइनल का पहला मैच आर्मी ग्रीन आर्मी वाइट के प्लेयर्स के दरमियान आज मुकाबला है 52 to 57 वेट कैटेगरी। यहाँ पे समझाया है जाकिर को रेफरी ने और अहमद को भी कि वो अपने चेहरों को सामने रखें, सर को झुकाए ना।
कि दूसरा राउंड इख्तिताम को पहुंचा। राउंड 3 का आगाज हुआ चाहता है। ओह, भरपूर अटैक अफरीदी की तरफ से। अच्छा टैकल किया है जाकिर हुसैन ने। जी, जाकिर हुसैन यकीनन एक मंझे हुए पुराने खिलाड़ी हैं तो यंग, लेकिन उसकी निस्बत अहमद अफरीदी की निस्बत ये पुराने हैं और बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, जबकि अफरीदी भी उनने इसे अपने ज़हन पे हावी नहीं होने दिया और बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। मैंने अली पहले भी कहा था कि अहमद अफरीदी जो है ये जाकिर हुसैन को मुश्किल में डाल सकते